So, hello guys, welcome back to another live stream and today we are playing Genshin Impact and आज अपडेट आया है Genshin Impact में 2.4 का, जिसमें कि काफ़ी सारे नए एरियाज एंड काफ़ी सारे आर्कॉन क्वेस्ट एंड काफ़ी सारे नए बॉसेस भी आए हुए हैं, मिनी बॉसेस एंड मेन बॉसेस भी आए हुए हैं। सो काफ़ी मज़ा आएगा मैप को एक्सप्लोर करने में एंड लेट्स सी कि कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है। अभी तक मैंने चालू नहीं किया है, अभी चालू करेंगे एंड देखेंगे कि क्या क्या आया हुआ है। उसके अलावा हम जाओ के लिए 20 पुल्स करने वाले हैं। अगर जाओ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, नहीं तो जोंगली के लिए ज़रूर जाने वाले हैं हम। सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन। जितने बंदे अभी तक स्ट्रीम पे आए, जितने बंदों ने स्ट्रीम को लाइक किया है, जितने बंदे स्ट्रीम पे न्यू है गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द स्ट्रीम एंड लाइक द स्ट्रीम गाइस। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम, लेट्स जंप इनटू द गेम एंड हमेशा की तरह गाइस सबसे पहले चैट पढ़ लेते हैं लोगों की, देन वी विल मूव ऑन टू द गेम एंड लेट्स सी। अभी मुझे बिग बैंग की मुझे दिख रही है चैट, तो हेलो बिग बैंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। आज तुझे बीजीएमआई में खेलना था या जेंसिन खेल रहा है? मैं जेंसिन खेलने वाला था बिग बैंग, कल ही बताया था मैंने कि आज मैं जेंसिन की स्ट्रीम करूंगा, देन कल फिर वापस बीजीएमआई रहेगा एंड देन परसों कस्टम रहेगा क्योंकि फ्राइडे रहेगा। सो अभी तो प्लान यही है। और सुनाओ बिग बैंग, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया हूँ। खाना आना हो गया तुम्हारा बिग बैंग? हेलो शशि, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसा है? बढ़िया हाल चाल है शशि। हेलो सुदीप, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो सुदीप? कैसा चल रहा अभी गेंशिन में तुम्हारा एक्सप्लोरेशन फ्रेंड्स के साथ? बताओ, दिन हो गया, रात से खड़ी है ये बेचारी, रात से खड़ा रखा हूँ इसको। सो लेट मी शो यू गाइस कि नया एरिया कहाँ आने वाला है, आया है। तो बेसिकली हमारा ये जो संगनोमिया श्राइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली इस टेलीपोर्टर के नीचे से टेलीपोर्ट करना है एंड देन एक डिफरेंट एरिया है हमारा उसके लिए। एंड उसके अलावा आर्कॉन क्वेस्ट आया हुआ है यहाँ पे लीवे हार्बर पे, सो वो भी हम करेंगे। एंड आई थिंक जाओ के लिए 20 पुल्स हम अभी के अभी कर देते हैं बिकॉज क्योंकि क्या रखा है 20 पुल्स में। एकदम मस्त। सुजत, मेरे बीजेमआई में एक दिन का कस्टम रूम कार्ड पड़ा है, तुझे फ्राइडे चाहिए? बिग बैंग रखे रहो, उसको बाद में काम आ जाएगा, एक्सपायर तो होगा नहीं, तो रखे रहो अभी। अभी तो मैं अम्मू की आईडी से ही बनाने वाला हूँ, उसके पास बहुत पड़े हैं। आज ट्रैवलर को डिवोर्स दे दिया, बहुत सही। मैंने तो अपडेट करने पे सबसे पहले सकुरा ट्री लेवल 50 किया। ओ हाँ, चलो सकुरा ट्री से वो लेके आते हैं, ब्लेसिंग्स लेके आते हैं जल्दी से जाके। मेरा 50 नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता 50 होगा, इनफ नहीं है मेरे पास आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है। बट स्टिल ब्लेसिंग्स लेके आते हैं सकुरा ट्री की, जाओ को निकालने से पहले। जाओ बस 50-50 पे है, कुछ भी हो सकता है। बोला ना 49 मैक्स जाएगा, 25 पे अटक जाएगा। अरे क्लेम ऑल का ऑप्शन रखो बे। दो दो विशेष यहाँ से मिल गई हैं, यहाँ से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नया भूल गया नाम मैं, क्या कहते रहे इसको। बिलेट मिल गया है बो का, यहाँ से टैलेंट मटेरियल, देन यहाँ से एक दो विशेष और, यहाँ से बैकग्राउंड मिल गया है, यहाँ से अगेन क्या कहते हैं टैलेंट अप मटेरियल मिला है। कैसे हो सर? बढ़िया हाल चाल है सुदीप। तू ये बता, डार्क डिसेप्शन और केस एनिमेट्रॉनिक्स कब खेलेगा? बिग बैंग खेलेंगे, उनको चिंता मत करो। खरीदना पड़ता है गेम्स, ऐसे थोड़ी ना होता है, खरीदने के लिए पैसे होने जरूरी हैं। अभी इस मंथ तो नहीं ले पाऊंगा, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। ये लास्ट वाला अभी हो जाएगा, एक्सप्लोर करूंगा थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा आई थिंक। कितना बच रहा है? 4 बच रहा है, 4 नहीं 6 बच रहा है, 6 नहीं 7 बच रहा है मेरा। 7 यहाँ से मिल जाएगा, देन ये भी हो जाएगा, 2 विशेष और आ जाएंगे यहाँ से। और नया नेम कार्ड लगाते हैं बैकग्राउंड के लिए, नया जो दिया है इन्होंने। ये कितना मस्त लग रहा है रेडन के ऊपर। फॉर्चून चेक कर ले, फॉर्चून चेक कर लिया हूँ मैंने। फॉर्चून चेक दिखाना है तेरे को आज का? दिखाता हूँ देख, फॉर्चून दिखाता हूँ।
कहाँ गया? ये रहा स्लिप, सुबह ही देख लिया था। राइजिंग फॉर्च्यून है, दैट मीन्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आओ चलें उस पे। मुझे यहाँ पे अभी मेरी पिटी कितने की है देखना पड़ेगी मेरे को, कितने की पिटी है। आई थिंक 68 की है, जितना मुझे पता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12 पे भी दो हैं, तो 11 11 मल्टीप्लाइड बाई 66 एंड 62 एंड 68 है। बोला ना 68 की पिटी है। 68 की पिटी है अभी इस पे। कुछ भी हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सेवेंटी एट पे मिल गया 5 स्टार। भाई गोरू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो गोरू, तुम्हारा बैनर भी नहीं है ये तो, साले ऑफ बैनर हो तुम तो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई कितना लास्ट पे ही दिया है क्या? 78 पे दिया है। ओ माय गॉड, 50-50 जीत गया तेरा भाई। ये 50-50 जीत गया गाइस। जाओ मिल गया तेरे भाई को। 50-50 वॉन गाइस। देख ससी देख, 50-50 जीत गया मैं। अगला वाला भी जीतना पड़ेगा, नहीं तो जोंगली में लग जाएंगे हमारे, क्योंकि 50-50 उस जोंगली में जीत गया तो फिर मैं गान्यू के ले जाऊंगा। बताओ ये ऑफ, ये मैंने पिछले बैनर पुल भी नहीं किया, इस बैनर पे साला जबरदस्ती मेरे को थमा दिया इन्होंने, पकड़ा दिया इसको गोरू को। हैं? मेरी तो विशेष बच गई। आओ उसको लेवल अप भी कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे पास उसका वेपन पड़ा हुआ है, मैंने कर रखा है। आई मेरे को एक बार और देखना है एनिमेशन इसका, ये वाला। आई ये पैर से क्या मार कर घुमाता है ये बंदा। ये पड़ा हुआ है, मैंने इसको कहाँ गया, जांगलिंग को अभी ये वाला दिया है। डेथ मैच को रिफाइनमेंट 2 कर सकता हूँ मैं। आर्टिफैक्ट नहीं होंगे। आई थिंक इसको लेवल अप जरूर कर सकता हूँ मैं। मटेरियल पड़े हैं अपने पास सारे। कॉन्करर ऑफ डीमंस। और अभी स्टैंडर्ड बैनर पे पुल कर सकता हूँ मैं, इतने इतनी विशेष बची होंगी मेरी। 5 एक साथ और गर्लफ्रेंड बना लिया, नई लोल। बिग बैंग हर दिन नई एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है लोगों के ऊपर फ्लैक्स करने के लिए, तुमको पता नहीं है? वेट, इसका क्रिट रेट बढ़ रहा है, मतलब मुझे क्रिट डैमेज चाहिए होगा इस बंदे पे। ओह सही है। क्रिट रेट बढ़ रहा है इसका, सही है बे। सबसे कम क्रिट रेट ही मिलता है, क्रिट डैमेज तो भर भर के मिलता है लोगों को। मतलब सही है फिर तो ये, आराम से बिल्ड किया जा सकता है इसको। 5 गर्लफ्रेंड नहीं, 5 तो बिग बैंग के नाम में था। अच्छा ऐसा बिग बैंग के नाम में 5 था। अभी ये कम पड़ रहा है, ये तो ये हमारे मेरे पास भर भर के पड़ा है। बाद में करेंगे इसको, वो जाना पड़ेगा उसको मारने। यहाँ से 2 विशेष मिली हैं।
आर्टिफैक्ट लगा लेते हैं इसको। आई थिंक 2 पीस ग्लैडिएटर लगता है, एंड 2 पीस क्या कहते हैं, एनिमो वाला कौन सा रहता है, मैं नाम भूल गया उसका, एनिमो वाले का। बेराडेसेंट वाला लगता है, वेनियर लगता है। सो 2 पीस ये लगाने, 2 पीस वो लगाने हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे क्रिट डैमेज चाहिए इसको। मैंने ये लॉक क्यों करके रखा है? अच्छा, इसमें डिफेंस था, क्रिट डैमेज था, इस ऑफ पीस है वो, लेकिन अच्छा पीस था। ये अच्छा पीस है। क्रिट रेट के साथ क्रिट डैमेज, बट रोल हुआ तो ही है, नहीं तो टट्टी हो जाएगा ये भी। अरे ये कौन सा गेम है ये? गेंशिन इम्पैक्ट है, बेसिकली स्टोरी मोड गेम है, एंड अवेलेबल है अक्रॉस पीसी, मोबाइल, निंटेंडो स्विच आने वाला है आई थिंक, प्ले स्टेशन पे भी अवेलेबल है। एंड यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड्स इन क्रॉस प्लेटफॉर्म, एंड हर प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी स्टोर रहता है प्रोग्रेस, तो बेटर है ये वाला। इसको क्रिट डैमेज चाहिए है, क्रिट डैमेज कहाँ से लाऊंगा? क्रिट रेट दे तो दूंगा, लेकिन क्रिट रेट चलेगा नहीं। रुक जाओ, क्रिट डैमेज चाहिए है ना? क्रिट डैमेज ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये दे सकता हूँ अभी को, अभी के लिए इसको, या ये वाला दे दूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक ये वाला देते हैं, क्रिट डैमेज देते हैं इसको, क्योंकि पी ऑन पीस रहेगा, नहीं तो ऑफ पीस चले जाएगा ये। मेरे को पहले वो देखना है स्टैट कौन सा रोल होता है अगला। एचपी परसेंटेज ऐड हुआ है, नहीं चाहिए। इससे अच्छा क्रिट रेट दे दूंगा अभी ऐड। तुझे तेरे घर से कल रात रात आतों की आवाज आ रही थी लड़की की, बता क्या कर रहा था तू? बिग बैंग, तुम ये बताओ पहले कि तुम मेरे घर पे आके कान लगा के सुन क्यों रहे थे? मुझे ये जानना है पहले। हैं? किसने बोला तुमको हमारे यहाँ ताक झाक करने के लिए? कहाँ गया वो एक और पीस? ये रहा। तो वो किसने किसने बोला कि ताक झाक करो हमारे घर पे आके? रुक जाओ, डालने दो, कहाँ गया? देर इज नो वे। इसने क्रिट डैमेज ही डॉज कर लिया पूरा का पूरा है। पूरा का पूरा क्रिट डैमेज ही डॉज कर लिया इसने। और डिफेंस बढ़ा, डबल डिफेंस रोल हो गया। ऐसा ही होता है बस, जिंदगी में यही है। ढूंढना पड़ेगा इसके लिए डिफरेंट कोई क्रिट डैमेज का गॉबलेट। अब ये दे देते हैं, रोजारिया का दे देते हैं क्रिट डैमेज का गॉबलेट इसको। इसको यहाँ पे अटैक परसेंटेज चाहिए ना? नहीं, हाँ अटैक परसेंटेज चाहिए इसको। एनिमो डैमेज बोनस 15% यहाँ से मिलेगा इसको। अरे जब इतने जोर जोर से मारेगी तो नींद की ही खुल जाएगी। तो तू मेरे यहाँ थोड़ी ना रहता है कान लगा के सुनने आया है तू यहाँ पे? हैं? अभी के लिए ये दे देते हैं काम चलाने के लिए, क्योंकि मर मर ना जाए बेचारा, मरेला सा ऑलरेडी है। एक सेकंड देना, इसको जल्दी से कर दूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आर्कॉन को ऐसे। गोल्ड वाला आर्टिफैक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहाँ गया? ये फालतू के पड़े हैं, इलेक्ट्रो के किसी काम के नहीं है।
इनको डालेंगे अंदर। HP ऐड हो गई। नो वे कि डबल HP रोल कर दिया इसने। अभी तू रख ले ये वाला, तेरे लिए बाद में फार्म करूंगा आराम से। तू ये हा कराया आज, रहन दो। रोल हा कराया पूरा। कहाँ गया बर्डेसेंट बैनियर? हाँ, रोल कहाँ गया? रोल किया था क्या अभी? अभी के लिए तेरे को ये दे देता हूँ। कहाँ गया? ग्लैडिएटर फिनाले पे भी था कहाँ? एनर्जी रिचार्ज नहीं चाहिए, अटैक परसेंटेज चाहिए इसको। ये फिजिकल डैमेज यूज करता है वो यूज करता है एनिमो डैमेज यूज करेगा? आई थिंक नॉर्मल यूज करता है ना ये। इसके सारे अटैक एनिमो रहते हैं, तो अटैक परसेंटेज देना पड़ेगा इसको। अभी के लिए ये रखते हैं, इसका आर्टिफैक्ट फार्म करूंगा मैं बाद में। 4 एंड अंडर को सेट कर लेना, अपने आप ऐड हो जाएगा। अबे तो वो उसमें कुछ अच्छे भी आर्टिफैक्ट पड़े हैं, मैंने लॉक नहीं किया है सारे आर्टिफैक्ट। क्या है, बहुत आलस आता है। देखो 1000 हो गया उसका। आओ जाओ को लेके आते हैं बाहर। कहाँ गया जाओ? Evil shall be उसमें कुछ ठीक ठाक भी आर्टिफैक्ट पड़े हुए हैं। मैंने इवन मैं रेयरली मतलब ग्लैडिएटर वाले को हाथ लगाता हूँ, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ती है। अभी इस जाओ के लिए जरूरत पड़ी है, ग्लैडिएटर की नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती है। आओ उससे चालू करते हैं, क्या कहते हैं हमारे। ये मेनली एनिमो डैमेज यूज करेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, फिजिकल तो आएगा भी नहीं है। वो अटैक जब करेगा तो एनिमो ही डैमेज आएगा, तो फिजिकल लगा के फायदा नहीं है। अरे मैं कहाँ गया? मैं ट्रैक करना था मुझे क्वेस्ट, एक सेकंड देना। जेट चैम्बर राइजिंग ये वाला करना था। चल सूजा, मैं जा रहा हूँ पबजी मोबाइल खेलने। बाय, कल आता। बाय बाय बिग बैंग। समझ नहीं आ रहा भाई, केसी समझ नहीं आ रहा। अबे मतलब स्टोरी गेम है, एक्सप्लोर कर सकते हो फ्रेंड के साथ। मैप मैप बहुत बड़ा है, अभी खुलते भी जा रहा है हर अपडेट के साथ। मैप खुलता जाता है इफू। एंड देन कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स को बिल्ड करने का डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। उसके अलावा डोमेन्स होते हैं जिसपे तुम जाके फार्मिंग करते हो। वर्ल्ड बॉसेस होते हैं। वर्ल्ड बॉसेस ये देखो, ऐसे ऐसे वर्ल्ड बॉसेस होते हैं जिनके पास तो मटेरियल ड्रॉप होता है। वीकली बॉसेस होते हैं ये वाले, ये वीकली बॉसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत बड़ा गेम है, खेलने के लिए जाओगे तो। 4 स्टार कौन यूज़ करता है तेरे पास? इतने सारे 5 स्टार हैं। अबे 5 स्टार होने वैसे अच्छा, होने वैसे फर्क नहीं पड़ता ना ससी। वो और ऐसा नहीं है यूज़ कौन नहीं करता, करता है भाई। जब इमरजेंसी होती है ना, करना पड़ता है। I have gathered everyone here today to make an important announcement. तो उसका ऐसा है कि देख, 5 स्टार अगर तुम्हारे पास अच्छे हैं तो ही यूज़ करोगे ना, बेकार है तो कौन यूज़ करेगा? Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge... Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. एंड्रॉयड में मिलेगा क्या ये गेम? हाँ इफू है ना एंड्रॉयड पे। प्ले स्टोर पे सर्च करो गेंशिन इम्पैक्ट स्ट्रीम पे, टाइटल लिखा ही हुआ है, सर्च करो तुमको मिल जाएगा गेम। हर प्लेटफॉर्म पे है। Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils.
Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. एंड्रॉयड में मिलेगा क्या ये? Only sufficiently large pieces of plostrite, or specifically vermilionite, may earn themselves the sunset moniker. This stone is what allows the jade chamber to float. Wonder cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the jade chamber. Adepti sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find, and in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest... These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence! I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but I have some business to do. सो बेसिकली लिवे हार्बर जो है, लिवे हार्बर बेसिकली वेल्थ के लिए ज़्यादा जाना जाता है और मार्केटिंग के लिए ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए ये लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे मतलब अपने पैर पसा रहे हैं वहाँ पे मार्केट में लोग, तो इसलिए ये लोग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन निंगवांग ही है. No. We better move quickly, or this opportunity... Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? Then So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. really? Ooh, then Paima will ask you about how to run a business. Then we'll never be short of Mora ever again. Of course. But how... The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the ओ materials, समझा है, please take them there. ये वहाँ पे जा रहे हैं ये लोग, क्या कहते हैं जो मैंने देखा था कि गोल्डन हाउस के जस्ट बाजू से एक रास्ता गई हुई है सेजम के लिए, वो रास्ता भी ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पे ये लोग बना रहे I हैं जेट have other चैम्बर. business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not... Ningguang seems super busy. Come on, first we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down. No, I don't need... Don't be like that. Hey, come on! Why don't you stand there? Oh, right, yeah. तो इन्होंने स्टार्टिंग में इन्वॉल्व कर दिया है सिन्हा को, लगा नहीं था इतनी जल्दी ये लोग करेंगे. You hear that? They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. कहाँ गए ये लोग? आ गए हैं, अच्छा. Useless. Huh. They're not here. Let's keep looking.
Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some mora, we give you a little info. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you, I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. स्नेहा का किट देखा, मुझे कुछ खास नहीं लगा. ओनली क्रायो बूस्ट देती है, वो भी सिर्फ 7 हिट्स. ससे तुमने ढंग से देखा है किट? पहले ये बताओ मुझे. तुम अगर गान्यू के लिए जा रहे हो ना, मैं बोलूँगा सिन्हा को पुल कर लो. अपॉर्चुनिटी आने मत दो हाथ से, क्योंकि सिन्हा जो है गान्यू, यूला और क्या कहते हैं तुम्हारे क्रायो को कौन सा करेक्टर कह सकते हो बेटर वाला, आई थिंक आयाका, इनको सबको बूस्ट देगी. ठीक है, अगर तुम पार्टी में इस्तेमाल करते हो, अगर कभी मतलब ऐसे टीम बिल्ड करते हो तो उसका उसका किट बहुत सही है स्नेहा का, ऐसा नहीं है, एज अ सपोर्ट कैरेक्टर. और जो वो फिजिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज करने वाला किट है ना, स्पेशली वो ज़्यादा काम का है. फिजिकल एंड क्रायो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने वाला है एनिमीज़ का. तो सपोज अगर तुम गान्यू से अगर सपोज तुम 50,000 का हिट मार रहे हो, तो तुम इसको अगर टीम में रखोगे तो तुमको 70,000 का सिंगल हिट पड़ेगा एनिमीज़ को. ठीक है, तो बहुत सही किट है उसका, ऐसा नहीं है कि बेकार है उसका किट. I won't. No more excuses! Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyu at kiosk, then Wanmin restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then how could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue, but here we are. Perhaps... yes. Let's call it... Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. The Millilith. What are the Millilith doing here? Did you do this? You are... Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with... No, don't be angry, sir. पता है, अभी मैं ससे मेरे को ये भी डाउट है, जो नया स्फीयर आया हुआ है ना, ये वाला क्या कहते हैं, जो नया वाला स्फीयर जिसको मैंने अभी जंगलिंग को दे रखा है, उसमें अटैक परसेंटेज है. ठीक है, तो उस पर डाउट ये है कि वो मतलब कितना यूज़फुल रहेगा जाओ के लिए, बिकॉज उस पर बेस्ड ऑन कि तुम्हारी टीम का एनर्जी रिचार्ज कितना है टोटल, उस पर वो अटैक डैमेज डील करता है, और प्लस अटैक परसेंटेज का उस पर स्टैट है, तो बहुत काम का है वो भी. Shenhe, Shenhe? my name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. This is Lila Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No, apparently not. Really? So how exactly have you... That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but then of course you're still hungry. So?
Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Medicinal. Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shujha there for a big... After all, you can't work on an empty stomach. Do you think Shujha... वेट, इसका रीसेट नहीं हुआ था. It seems like it's her first time in... Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. नहीं, गान्यू पुल करूंगा तो फिर जोंगली मिला तो ठीक है, वरना याइमी को ट्राई करूंगा. याइमी को उसके लिए सही रहेगी. जितना मैंने उसका बाय द वे किट निकल आया है, पता है उसका याइमी को का अटैक्स एंड क्या कहते हैं, अटैक्स एंड अल्टी का वो किट आ चुका है याइमी को का. तूने देखा है शशि? अवेलेबल हो चुका है इंटरनेट पे. एंड जितना मैंने देखा है वो क्या कहते हैं राइडन सोगन के लिए बेस्ट सपोर्ट है. She's really eating them. My hunger has now abated. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance, after consuming a large quantity of them, bitter. So, how come you chow down on these and barely touch the rest? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious. But should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptus. Enough about me. What are your... Oh, right. Paimon almost forgot. We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber. याइमी को डीपीएस है. मुझे सपोर्ट लगी है, डीपीएस नहीं लगी है. याइमी को मोर लाइक अ सपोर्ट लगी है. And now we're probably super behind because we've been held up for so long. बट ये भी है, पता है याइमिको के साथ शायद काजुआ का बैनर आने वाला है या फिर राइडन सोगन का बैनर आएगा. सो केयरफुल रहना है, उस हिसाब से मतलब पुल करना पड़ेगा लोगों को. याइमिको अभी दो मतलब जोंगली गान्यू के बैनर के बाद तुरंत नहीं आएगी. उसका प्रॉब्ली काजुआ का बैनर आएगा वापस से. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shujha? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. Wow! You really don't have to, but having an adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent... सपोर्ट कैसे क्या बफ करती है याइमी को? पहली बात क्या कहते हैं इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है याइमी को, ठीक है. और अगर तूने कभी डोमेन पे गया हो जहाँ पे आई थिंक टैलेंट बुक की फार्मिंग होती है, तो वहाँ पे साइड में जैसे नहीं साइड में नॉर्मल वो लगे रहते हैं इलेक्ट्रो छोड़ने वाले मैकेनिज्म लगी रहती है जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. वो वैसा मैकेनिज्म है उसका. और एट अ टाइम 3 ग्राउंड पे अगर तुम छोड़ दोगे और इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस हर एक डिक्रीज कर रहा है तो समझो कितना डैमेज करेगी तुम्हारी राइडेंस होगन. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Vito! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and... Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top. I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. Baishu, what are you doing out here?
Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out. Huh? How come Lady Ningguang needs so much I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customer's personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time... No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Useless. Time to act. वेट, इसका ये चार्ज अटैक वो नहीं करता है, स्टैमिना कंज्यूम नहीं करता है. आई जस्ट रियलाइज. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of... Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in... I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. As well? The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction. And a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. 500 million?! Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any Sunset Vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some Sunset Vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to... Wouldn't it be a little, you know, disrespectful? With him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded?
I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So Okay, we will. Search for abode in around the Lisha area. Okay. useless. वेट, इन्होंने ये चेंजेस किए हैं क्या? पहले नहीं था क्योंकि ये यहाँ पे, जितना मुझे याद है इन्होंने चेंजेस डाले हैं लगता है यहाँ पे। पहली बार देख रहा हूँ मैं। नहीं, ये पहले से था। Let's see. Shincho said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? Boring. ए नहीं 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 नहीं, नीचे कहाँ जा रहा है? No cryo and geo in current party. Avoid sea gazer has been abandoned for some time. Who cares? I don't care. क्योंकि सनहा देगा ही मेरे को। How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti. All right, then let's do. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. ओ वो इसने Unleash. ओके। Obey. इसकी होल्ड स्किल कैसी है? एक सेकेंड। My will embodied. ओह, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। भाई कहाँ जा रही है? Body and mind. Ring cutter. Illusion shattered. Useless. Shine down. वेट, ऊपर जाना है? नहीं नहीं, यहीं से जाना है आई थिंक।
कहाँ से जाना है ऊपर? विंड करंट क्यों नहीं दिख रही? अबे ये क्या विंड करंट है भाई? अटैक स्पीड बहुत तेज है जाओ के। ओ यहाँ पे चेस्ट रखा है हिडन, देखें पूरा हिडन चेस्ट रखे हैं इन्होंने। इधर आओ बे। No, my sword. Let's light it up. There is no escape. Manifest. It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Let me leave you a verse. Let's light it up. I'm going it. Evil conquering. Here. Worthless. Useless. Adventure time. By ordinance divine, manifest. No, my sword. Witness the power. The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Useless. भाई ये सही है बे। रेंज देख रहे हो इसकी कितनी ज्यादा है? इसको कैसे करूं? Illusion shattered. Unleash. अरे यार स्विगी को ऐड आ गया, अब भूख लग रही। It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Now you shall perish. Rain outlines your fate. Unleash! There is no escape. मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। You will regret this. Obey. Cryo incarnate. Witness the power of Gugwa. Know my soul. Teamwork is dreamwork. Disappear. खत्म हो गया इतनी जल्दी ड्यूरेशन खत्म हो गया। मेरे को लगा और ज्यादा ड्यूरेशन रहता है इसका। गेम कैरेक्टर से अरे
इसे यू बोल के दिखाओ। वो ये क्या था बे? ये क्या था है? Rain outlines your fate. Unleash! रूइन गार्ड क्या कर रहा है यहाँ पे? मेरे को ये जानना है। We're gonna fall. This time, we're really gonna fall. Ah! So high. Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very differently. Hey! That Sealy's on the move again. Let's catch up with it. Body and mind. Huh. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. मेरे को एक सेकंड ये देखना है इन्होंने क्या बिल्ड किया है इसको। नोबलिस का सेट दिया है क्योंकि डैमेज ठीक है इसका। क्लाइमेटिक कोयलर है, R1 है, 82 आउट ऑफ 90 है, 82 आउट ऑफ 90 है। कॉन्स्टलेशन C3 है इसका यहाँ पे। टैलेंट 6996 है। इसके भी करने थे मुझे टैलेंट अपग्रेड, भूल ही गया था। अबे कल एग्जाम है मेरा, सब मेरे लिए दुआ मांगो। तू तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है वे, कितने तेरे लिए दुआ की क्या जरूरत है तेरे को सोनिक? हैं? दुआ की जरूरत उनको पड़ती है जो पढ़ाई में बेकार होते हैं। सोनिक भाई भगवान करे कि कल तेरा एग्जाम ही ना हो। ऐसा मत बोल भाई, ऐसा मत बोल। रॉक बोन्ड बज। Time to act. ऐसा ना बोल, नहीं तो उसको वापस से पढ़ना पड़ेगा बाद में। हाँ यार शिवम कल लॉकडाउन लग जाए। देखा भगवान सुन लिए। अरे ए भाई रुक जा, कैरेक्टर स्विच तो करने दो। Let's light it up. I'm going in. Shine down. देखो अभी कैसे मारते हैं इनको। Torn to oblivion. Obey. Unleash. By ordinance divine. Rain outlines your fate. Witness the power of good. Evil conquering. Here. भाई ठीक है बे, 5000 का डैमेज मार रहा है, क्या चाहिए इसको? हैं? बुरा नहीं है बे, 5000 का डैमेज मार रहा है। जाओ अभी इतने उसके आर्टिफैक्ट अपग्रेड भी नहीं हुए हैं दो। भाई दो दो आ गए हैं। You are dead, my guy. फ्रांस वाले वेरिएंट का नाम है
IHU। अभी फ्रांस का एक और वेरिएंट आया है। फ्रांस का एक और वेरिएंट आया है। मैं समझा नहीं सर से, किसकी बात कर रहा हो? ये हील कर ही लेते हैं ना, मरवाने से बेटर ही है। और सिली चलें। अच्छा, फ्रांस के कोविड का वेरिएंट का नाम है IHU। मैम ने पूछा मुझे से तो मैंने बोल दिया नेटवर्क नहीं आ रहा था। मेरी एक थी ऑनलाइन में ज्वाइन करके लेफ्ट कर दिया और फ़ोन एयरप्लेन मोड में डाल दिया। ये भी सही है। वाह सोनिक, सही स्कैम किए हैं, मतलब पढ़ाई से बचने के लिए। मैं यहाँ जा ही नहीं सकता हूँ। व्हाट? मैं सोचा क्रॉस कर सकते हैं, ये जाने नहीं दे रहा है गेम। यू हैव टू फॉलो। सुझा वो बुलवा ससी बुलवाएगा ना। ये देखो क्लोजअप लुक देखो शिवम। सेम हाइट है बे इनकी, राइडन और इसकी सेम ही हाइट है। आई थॉट डिफरेंट हाइट होगी। आई हेट यू लॉन्ग 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 फॉर्म है। Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Prostrate reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending. Wow, Shujha, you seem to. Only because my master is. अरे थोड़ा और जूम, इससे ज्यादा जूम नहीं आता शिवम। Time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. CN सर्वर में 4 कैरेक्टर का डिजाइन चेंज करा, बोला अप्रोप्रिएट नहीं है वो लेकिन पता है अवेलेबल हमारे लिए भी रहेगा, वो चेंज कर सकते हैं हम। लेकिन उनको ये भी फायदा है कि वो कैरेक्टर का डिजाइन जिनका चेंज कर रहा है वो लोग ज्यादा यूज करते नहीं उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को। और रही बात, उनको फ्री प्रीमोजेम मिल रहा है 1200, क्या ही फर्क पड़ेगा। I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky. But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Please don't worry. I'm well aware that a Plostrite sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. My safety. चल बाय, जा रहा स्टडी करने। बाय बाय सोनिक, एंड आई होप तुम्हारा एग्जाम सही जाए। पूरा जूम करके दिखा जिसको। कैमरा ही डाल देता हूँ अंदर, कैमरा ही डाल देता हूँ। इस पे जूम करना, किस पे? पाइमॉन पे जूम करना है। शर्म नहीं आती शिवम तेरे को? हैं, देख रहा है ऐसा से, इसको शर्म नहीं आ रही है? Is it now? I'll go on ahead with the Plostrite. Let's meet at the building site later. How is Shujha able to carry that huge rock all by herself? Adepti super strength much?
चलो 10 पुल और करते हैं एक और, मेरे को देखना है, मेरे को थोड़ा पिटी बन जाएगी इसी बहाने। ये क्या है बे? आई ऑफ परसेप्शन, ये किसी काम का है क्या? जो 4 स्टार इन्होंने दे दिया है। अरे यहाँ पे 10 पीसेस थी ना, इसको खोलते हैं। भाई फिर से रस्ट दे दी भाई, ये मेरी पता चौथी पांचवी रस्ट होगी। इतनी सारी रस्ट दे दी, बताओ एक कैरेक्टर ना दिया इन्होंने। ओ नाइस, निंगवांग मिल गई। निंगवांग मिल गई है। निंगवांग ही तो चाहिए थे मुझे, कहा इसका स्किन लेनी है, स्किन मिलेगी सच। सोल डिस्क्वालीफाइड, क्या बात कर रहे हो सर्टन? सोल निकल गई, वो 4th पोजीशन पे चल रही थी, मैंने लास्ट देखा। 7th है सोल। मेरी तरह संस्कारी बनो, बाहर देख विकार में जूम करके अपने आप को हरामी बना रहे हो। किसी और ने ले ली उसकी प्लेस। इस बार शायद सोल का लाइनअप चेंज हुआ था ना, जितना मुझे पता है सोल पे जो खेलने वाले बंदे थे वो अभी खेल ही रहे हैं, तो सोल का लाइनअप शायद चेंज हुआ था। फिर से चोंगयुन दे दिया। दिल खोल के देखने के लिए रेडन कार्ड चला सकता है। रेडन का चला तो लेंगे। आना है कैसे से तुमको यहाँ पे? तुमने कर लिया क्या डेली बॉसेस तुम्हारे? मेरे अभी बचे हुए हैं, करना है क्या तुमको? अगर करना है तो आ जाओ, करते हैं डुओ में। चाइल्ड को थपली देते हैं। अगर नहीं किया तो फिर मैं रैंडम के साथ कर लूंगा। बोलो जल्दी बोलो फिर। अच्छा तुमने कर लिया तो फिर रैंडम के साथ ही कर लेते हैं। कॉस्ट मेरा वैसे भी यही है, मेरे को क्या फर्क पड़ना है। माँ कसम अगर इसका जाओ ना लो लेवल का हुआ ना, मैं माँ कसम इसको तुरंत के तुरंत किक करूंगा अपनी उससे, अपनी लॉबी से तुरंत के तुरंत। अरे आया मैं, नहीं रहने दे सची, अब रैंडम को बुला लिया मैं अभी के अभी किक करेगा इसको, अगर ये कसम से अगर इसका जाओ लो लेवल हुआ तो। एटी 83 का है। चीची नहीं। भाई 3 अंडरडॉग टीम चली गई। कहाँ क्वालिफाइड हो गई 3 अंडरडॉग टीम? The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. To survive hardship, Transitory. you must prepare for hardship. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? अरे जल्दी रेडी कर लो भाई मेरे। क्या लोड़ूपंथी चल रही है इनकी?
This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Passable left. Four time. Passable left. भाई मेरे बंदा अब चल क्यों नहीं रहा है? Not bad, not bad. Let's light it up! Terra smash! Let's light it up! Guess I should take you more serious. Teamwork is dreamwork! Quick! आज मेरा बैनेट क्रिट कर रहा है. Let's light it up! Let's light it up! Let's light it up! तेरा क्या ओपिनियन है सुजा? किस पे क्या ओपिनियन है? स्नैक्स पावर स्पॉन जोनाथन. Adventure time! Everybody stand back! बस ये 3 प्लेयर ओवरऑल अच्छा खेलते हैं, बाकी स्क्वाड आज थोड़ा वीक पड़ गया. नहीं देख, हर दिन सबका दिन नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर वीक है. हर दिन किसी का, हर दिन सबका दिन थोड़ी ना होता है. किसी दिन किसी का होगा, किसी दिन किसी और का होगा. उसका बेचारे को गैंग वैंग कर दिया भाई हमने. इन्होंने लिटरली ट्रैवलर को बिल्ड किया है. दैट्स अ गुड पीस एक्चुअली. अटैक परसेंटेज में अगर यहाँ पे एनर्जी चार्ज जो अटैक पे जाता है, देन इट्स अ गुड पीस. अगर पूरा फेनेटिक वाले स्काउट को भी अभी स्काउट से कंपेयर करें तो अभी स्काउट थोड़ा वीक है. ऐसा नहीं होगा बे. हेलो ओशिम गुप्ता, वेलकम टू द स्ट्रीम. आप कौन है ओशिम गुप्ता? डू आई नो यू? आज सच्ची उसको मारते हैं, सिन्योरा को मारते हैं. जल्दी से सिन्योरा को ही मार देते हैं. आज मेरा बचा हुआ है. आना तो जल्दी आ जाओ फिर सिन्योरा को मारने. एंड व्हाई एम आई एट co-op राइट नाउ? रिक्वेस्ट आई थी किसी की. फिर से भेज अगर भेज रहा है तो. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. ट्रैवलर की फोटो लगा के रखा है. भाई ये क्या है? दो कैसे रिक्वेस्ट आ रही हैं? 2 टोमेटो कैसे आ रहे हैं? क्या चल रहा है? क्या लेने वाला है? मैं शिंगशो ले रहा हूँ और ये ले रहा हूँ. Benny's adventure team, assemble! मेरे को 2 बार दिखाया तेरा, पता है एंट्री का. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Or not. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Illusion shattered. Torn to oblivion. There is no escape.
अब उसका वेट करना पड़ेगा। ये अपनी एबिलिटी से मार सकता है वैसे तो। अरे जाना उससे मारना, क्या कहते हैं, डिलुक्स से मारना, जल्दी सील टूटेगी। तू डिलुक्स से मार सकता है। पीछे तेरे पीछे 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 पीछे। वाह मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, ज्यादा खेल लिया आउटराइडर लगता है। ये क्या बवासीर है बे, रजिस्टर ही नहीं हुआ। Let me weave you a verse. Shine down! Inazuma shines eternal! ट्रांसफॉर्म होने वाली है वो। Body and mind, rain outlines your fate. Illusion shattered! Torn to oblivion! Embrace your searing reckoning. ये कहीं टॉर्नेडो मोड में है। Not good. नहीं नहीं नहीं, मत तोड़ मत तोड़ मत तोड़, अरे मत तोड़ मेरे चच्चा, मत तोड़। अरे मेरे को क्वेस्ट कंप्लीट करना था, तोड़ना नहीं था ना। Let me weave you a verse. Embrace your searing reckoning! There is no escape! कहाँ भाग गए बे? Inazuma shines eternal! I never asked for redemption. Never. नाइस, दो दिया इसने लेकिन बाकी नहीं दिए मुझे। सर बिग फैन फ्रॉम दुबई, हेलो वीवो आईपीएल, वेलकम टू द स्ट्रीम। अबे 4 न्यू टीम क्वालिफाई। भाई तो वही, यही तो गेम है, कुछ गेम कब पलट जाए तो पता थोड़ी ना चलता है। आओ डोगो को ही मारना है, डोगो को ही मार के आते हैं। हील कर लो यहाँ पे आके। अरे पहले बोला था लो ला, छोड़ा वो गया, रहने दे। तोड़ ही दिया तुमने उसको, मैं मना कर रहा था मत तोड़ना करके। आओ डोगो को मारते हैं जल्दी से। हील कर लो तुम और आ जाओ, फिर तुम्हारे लिए टेलीपोर्टर भी लगा देते हैं। भाई चलता है भाई, वो जरूरी थोड़ी ना हर बार टीम अच्छा ही खेले। उसके अलावा और कौन सी अच्छी खेलने वाली टीम डिस्क्वालीफाई हुई है सोल के अलावा? ये ले आजा, रुक जा, कहाँ गया टेलीपोर्टर, कहाँ गया? ले तेरे लिए टेलीपोर्टर लगाता है, कहाँ गया? अबे मेरा टेलीपोर्टर कहाँ गया पे? हेलो, ये क्या स्कैम है? टेलीपोर्टर क्यों नहीं है यहाँ पे मेरे पास? अभी तो बनाया था भाई, स्कैम कर दिया भाई गेम ने। टेलीपोर्टर बना के रखा था, टेलीपोर्टर गायब कर दिया इन्होंने बैक से। बोले लगा दूंगा करके। हाँ टेलीपोर्टर है ही नहीं मेरे बैग में। आजा ससी। डबल होता हो मोड़ जाना है। Inactivity
activity serves आओ no purpose whatsoever. डबल उताव मोड चलते हैं। हील बस मत करना नहीं तो मेरे लग जाएंगे। No, my sword. एक सेकंड है ना, कूल डाउन पे है मेरा एबिलिटी। Rain outlines your fate. भाई मेरे को पार्टिकल नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है? पार्टिकल क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे? अब ये डेड है। देखा 95 का दिया उसको, 95,000 का दिया अल्ट मैंने उसको। गांडी ले ली उसकी भाई अल्ट पे। उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्या मार रहा है, वो पार्टिकल भी जनरेट नहीं करेगा तेरे लिए जिस मोड में तू मार रहा है। अब डेड है। एक भी नहीं दिया आज इसने। ये अच्छा पीस है बे ग्लैडिएटर का। क्रिट रेट क्रिट डैमेज दिया है अटैक परसेंटेज के साथ, जाओ के लिए बेटर है। ये क्या दिया है? ड्रॉप ही टट्टी किया इसने मेरे लिए। एक सेकेंड, जाओ के लिए बेटर पीस आया है। अरे कहाँ से करते हैं? चल बाय शशि, थैंक यू हेल्प करने के लिए। बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब वहाँ पे इकोनॉमी आ जाएंगे तब वहाँ पे करते हैं। अभी स्टोरी क्वेस्ट कंटिन्यू रखते हैं। अब मैं चला सोने। गुड नाइट शशि। इतनी जल्दी सो रहा है शशि? कितने बज गए वहाँ पे सिंगापुर में? कितने बजे हैं अभी? Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of the... Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may... This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item.
My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute. Shenhua and Ningguang's little helper. वो 90 के का मेरा अल्ट था भाई। अबे सची तूने भाई, वो मेरा था, देखता तो सही। अल्ट मैंने किया था उस टाइम, तूने अल्ट किया ही नहीं था। Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest Plostrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty. In truth, it is the finest piece of Plostrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next अगर stage तेरा of अल्ट लगा होता तो तेरा होता हील हुई होती, वो नहीं हुई, which means मिस हुआ। ऐसा तो नहीं है, As a side note, Lady Ningguang has क्योंकि rented तेरी some हेल्थ देख, buildings in the तेरी हेल्थ nearby देखना। area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua, Shenhua, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Oh, really? What kind of reaction is that? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. मैंने देखा अभी स्ट्रीम पीछे करके। I've had similar compliments before. नहीं हो नहीं सकता। अबे तूने अल्ट नहीं किया था उस टाइम, तो नॉर्मल तू चार्ज अटैक पे था उस टाइम। मैंने जितना ध्यान दिया था जितना। They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. हो सकता है, मेरे को पता नहीं। दे ठीक है वो। Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. Way different. But I am not. Shenhua? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and. You can't do that. It's dangerous out in the when you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's. जाना कहाँ है? वो पीछे जाना है यहाँ से। इन्होंने जो जो एरियाज इस्तेमाल नहीं हुए उन सबको इस्तेमाल किया इसमें एटलीस्ट। गुड नाइट ससी। Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, so business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack, or save it for breakfast tomorrow. All right. I will. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi. जैसे तूने कर लिए सारे क्वेस्ट ये वाले और क्या कहते हैं एक्सप्लोरेशन कर लिया इकोनॉमिया का? One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally.
Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor, all the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool! So, what's her adepta? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her... Her Adeptus name. Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? Paimon neither! This is a real surprise! Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so... When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not that she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering. In other words, if you hadn't passed by that day? Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind, and she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red rope... It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried. Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect.
The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, if she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. So, Shenhua isn't an Adeptus after all. Wait until following day. Around the Adepti. Hey, so Shenhua. Master has relayed my situation to you, I take it. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you. So I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, master is very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an Adeptus this whole time, but it turned... It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an Adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, for this, I am very... To be fair, we've met our fair share of real Adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an Adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other two items. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little help. After all, sunset vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slow. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beto! And hey! Person Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, Albie. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto? You're joining the Jade Chamber? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is
Shenhe. I am their friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yoon is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plaustrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plaustrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Su Ling if he's heard of them. We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to... The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. वाह इलेक्ट्रो एनर्जी मिल रही है फ्री में वाइल्ड से. Clear skies can do nothing to hide the brilliance of lightning. Divine bolts can strike even in the absence of rain. Do you see that tree? Wait, you want... Ah, hello. Are you here for something off the shelf? Or do you need some... Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a wonder core. Of course I have. Sorry. My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past. Yunjin? Stage use? Oh, sorry. My brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose... No, we were gonna ask you a kind... Sure. Well, you'll need 2 kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier.
It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask... Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favor, just perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head. अच्छा, इन्होंने सारे के सारे क्वेस्ट टेलीपोर्टर के पास दिए हैं. दैट्स काइंड ऑफ नाइस कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लोगों को उतनी जाने आने की. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like no wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where भाई mortals ओपी seldom मैचेस. stride. क्या शिवम पूरे मैचेस देख रहा था तो बैठ के? Looks like a place that one might expect to be frequented by adepts. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. What's the story about? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster. The wife was out collecting That's a kind. herbs That's a and was dedication, you captured know. by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! चल अब जा रहा. कहाँ जा रहा? बैठ के देख. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree कल of आता हूँ. deviation क्यों from the आता है? truth ये क्या कर is रहा है? always ये क्या inevitable. इमोट भेज रहा है? गड़बड़ लग रही है. रात में क्या करने वाला है When तू? my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character. I think it's a great story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some stuff! Use vision. Now where could this or be? There it is. Kotion or what?
iron. Now we just need to find that Subrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? What Shenhua? Yunjin. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjun. It's Shenhe. Shinha. You're alive. The rumors were true. So, all these years... I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjun has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can... ओ नाइस, यहाँ पे वो पड़ा और पड़ा है, बट इसको तोड़ू कैसे अब मैं? दिक्कत है ही है। तेरे को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आजा नोएल बाहर। I must leave no stone unturned. कोर लैपिस। For justice. A branch of family of exorcism used to live in east of the village. Of a god, an abandoned village, Mount Tianheng. But around 2 weeks, the mother died of disease. The young daughter went missing and sought after the father hanged himself from the tree in the yard of his own house. It has been confirmed that traces of an evil god remains were found in the village. The villagers are panicked as no one is certain whether the evil god remains gone for good. Do careful when you are in this area. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. What's this? Our doctor said you were gravely ill. Don't worry. I will give you everything that I have to save you. My heart bleeds whenever I see you getting weaker. Your illness beyond treatment. How I wish I could suffer the pain for you. You said you had no regret in your life. That you wish only to make me good care of Shenhe. But you regret nothing. Why the tears? I don't know what I've been doing lately. Though I still breathe, I feel like empty shell. I read all the ancient texts I could get my hands on. I finally found it. It's Mingjun. He kept the book that could save you hidden. I took it and followed the instruction to shaman the god and offer a sacrifice. The god appeared. I told him, I am willing to exchange my life for yours. He kept silent and only pointed at our daughter, Shenhe. A god said her fate was severe and curse of calamity, that she was prone to bring harm to those close to her. The god also said she might even have been the cause of your death. In that case, I thought I left her in a cave that God mentioned. 3 days have passed. Still no news. I grow restless from waiting. Sees the ominous feeling. I'm sorry, my love. Forgive me, you too, Shenhe. Please forgive me. How stupid I was. How blind. Let me apologize to both of you in person. So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right... So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her.
According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple, and she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his... We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. This is it! Magic engraved on Subrosium does not wear off easily. Some believe that stone to be a bridge between living and the dead. However, finding Subrosium is no easy matter. You need to be at the right place at the right time. Legends has it that you may find Subrosium if you stand in middle of the lake south of Mintyhang at dusk and look at the direction of setting sun. So basically, we need to go. Let's go back and tell. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not... It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look! This tells us how to find Subrosium. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. But, my master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe, in fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Look, we can't let someone else be... बाजू में ही है सब कुछ. Body and mind. Useless. ओ डूब जाएगा ये. पानी में नहीं जाना है तो.
हवा में रहता है तो ये वो करता है, क्या कहते हैं, स्टेमिना लेता है। नॉर्मली नॉर्मली स्टेमिना नहीं लेता है ये ऐसे। वेट until evening around 7:30. Okay. Evenings थोड़ा सा कम करते हैं ताकि एग्जैक्ट 7:30 तक 17:30 तक जा पाए। Wait, is that Zhao? Yeah, it's Zhao. Hi Zhao, Zhao को Zhao से मिलवाते हैं। What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingent. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. ये रहा सब रोशियम। That's everything we need. Let's head back and report in. Zhao क्या कर रहा है यहाँ पे? Paimon's curious if Beto's made any progress. Boring. Oh. So, This is some top quality ore you found. I think I'll get a guess now. It's my time. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot. Leave the Wonder Cores to me. Don't worry. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find items relating to the Adept? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know when we first met, I told you I came for the Jade Chamber. Not, in fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have... Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe... Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Wonder Cores and Sizzle. Okay. ओ भाई, ये तो पूरा जेट चेम्बर बन गया भाई ये ऊपर हैं? पूरे जेट चेम्बर बना दिए इन्होंने और एग्जैक्ट कॉपी है ये तो पुराने जेट चेम्बर की। Can I land on here? Can I land here? Let's see.
आई थिंक लैंड कर सकते होंगे। यप, लैंड कर सकते हैं। Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the travel. What? It's over already? I haven't even found the plus strike yet. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where they... Huh? Where's Beto? Captain Beto has some business to attend to. She will join later. Please come with me. All right then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber with... Rise of the Jade Chamber. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for... That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling कल मैंने city. अपनी 2 आईडी सेल कर दी, It एक is में 3 fitting for मिथिक the और finest दूसरे में 5। performance to be इसमें hosted 1000 by रुपए this. कमा लिया। दिस इज I अ can दिस think इज of no better बिजनेस। stage for you than here, Miss Yun. वाह बिग बैंग। Thank you, Lady कैसे से बेचा Ningguang. तूने बिग बैंग? किसको बेचा? Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, an instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of Great! So next time we run out of Mora, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Oh, a sense of belonging? Yes. To become fond of a place, to feel part of it. It always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. अरे सोचा इजी ट्रिक है, तुझे कोरियन वर्जन में 10 न्यू आईडी बना लिया है, फिर सब आईडी में तुझे 50 प्रीमियम, 50 क्लासिक और 50 क्रेट कूपन्स कलेक्ट करना है, फिर सब एक साथ ओपन कर लेना है,
फिर तुझे आसानी से 2-4 मिथिक मिल जाएगा, जैसे तू दूसरे पर्सन को सेल करके आराम से 500 से 1000 रुपये कमा ले सकता हूँ। बट बेचेगा कैसे, ढूंढता कैसे पर्सन को, वो पूछ रहा हूँ मैं। आईडी तो मेरे पास भी पड़ी है मिथिक वाली काफ़ी सारी। Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beto. It's your turn. Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not going to be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Beto, Ningguang, what? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the ascension ceremony commence. टेलीग्राम पे तुझे मिल जाएगा ऐसे बंदे जो मिथिक आईडी की डिमांड करते हैं। मैंने ऐसे 1-2 लोगों को चूना लगाया था। Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. Oh my god, कटसीन कितना मस्त बनाया है बे ये लोग। अडाप्टाई वो यूज कर रहे हैं ये लोग। डोंट टेल मी काजुआ भी आया है यहाँ पे। So this is Osial's wife, Overlord of Vortex. All hands, tsunami incoming! What's that? Wait! A giant wave! You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others
is the day that you can truly become part of human society. वेट, ये तो हया का अल्ट मार रही है बड़ा वाला। डोंट टेल मी, मेरे को भी जाना पड़ेगा नीचे। What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too. आजा ऊपर आ। कर क्या रहा है? कहाँ चला गया? मेरा अल्ट वेस्ट करा दिया इसने, इस चूतिया ने। दो और आ गए हेड। अरे भाई भाई भाई, अभी कमी थी क्या भाई? तीसरा हेड भी आ गया। अरे जाने दे, पास आना। क्लोज आ, तेरे को मैं बताता फिर। You will regret this. There is no escape. Let's light it up. Rain outlines your fate. भाई ये क्या है? तीन तीन हेड हैं इसके। Body and mind. आई हैव टू बी रेडी इसके लिए। Let's light it up. Useless. अरे ए भाई, पूरा जाओ कहीं मार देगा क्या भाई? ये बोटेक्स वाला सीन गंदा है भाई, गंदा वाला देता है। डैमेज गंदा वाला कर रहा है ये। कूद यहाँ पे, बाहर आ, हंसड़ी के बाहर आ। लबड़े लग जाएंगे मैं अगर उधर गया तो। भाई ये मारे यार, मैं कैसे इनको मारूं? ये तो बहुत दूर है, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए उतना दूर पार पाना। Off we go. I always bounce back. Just watch me. Teamwork is dreamwork. Huh? Shine down, torn to oblivion. भाई ये डॉज कर जा रहे हैं भाई, अल्ट कैसे मारूं मैं इनको? इनको अल्ट नहीं मारा जा सकता। Time to act. मार जल्दी, इधर आ। Obey. Illusion shattered. भाई सेंटर जाना जा नहीं सकता है, गंदा वाला दे रहा है। Body and mind. अरे वो भोसड़ी के रुकता है। Witness the power. Evil conquering. भाई ये अल्ट डॉज कर जा रहे हैं हरामी यार, क्या बंदे हैं। I always bounce back. Just watch me. Everybody stand back.
तू हील कर पहले इनको। एक और हेड डाउन हो गया, एक ही बचा हेड। नहीं नहीं नहीं, वो बच गया। मैंने डॉज कर लिया सबको। अबे पीछे से आ गया ये। मार मार। तू नीचे आ भाई, नीचे आ। मेरे को कसम से लाना चाहिए था शील्डर को, शील्ड बाय शील्ड के लिए। गलती कर दी मैंने पार्टी ना चेंज करके। भाई कैसे मारूं? ये तो भाई इतना दूर खड़े हैं। इसको तो गान्यू, इनको तो गान्यू ही मार सकती है सिर्फ। आने का नाम नहीं ले रहा है नीचे। निकलने दे। भाई नीचे आ जा भाई हेड, क्या दिक्कत है तेरे को? आने का नाम ही नहीं ले रहा है ये। और टाइम वेस्ट कराते हैं, नीचे नहीं आ रहा है। पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है हेड। Time to act. Body and mind. Forward. Manifest. Unleash. She's getting away! Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. आता ही नहीं है नीचे। I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow. Don't worry. She's not coming back anytime soon. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber... Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millelith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the comp. I wasn't trying to be a hero, though. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance... Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. While the position of Tianquan remains mine, I will always... Shenhe. One saw you secretly venture out from the mountains a few years ago.
and notice the air of dejection in which you return. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she... There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your... We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular... यहाँ पे और लगे हुए हैं, और निकालने हैं. Oh! Steady as stone. Someone needs assistance. Time to clean up. नॉक्टिक्यूलस जेड भी लगा है यहाँ पे. भैया तो भरा पड़ा है और से. एक यहाँ कहीं भी था, मैंने ऊपर देखा था. कचिंग क्या कर रही है यहाँ पे? The millilith's casualties are within the range we but in hindsight, there were still flaws. If we'd had more time, we must learn from this experience. ओह नाइस. जेट चेम्बर पे टेलीपोर्ट मार सकते हैं अब. ये सब बढ़िया कि इन्होंने. Wow! Everyone's already seated! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying and... Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. Hey! Look! Miss Yun is going on stage!
披冠到这里本该接近尾声。 Just does the 但 divine 今 damsel 日 duty. 我再添一笔，唱与诸位听，写好为你言故事，自有知音和情字，功名烈烈见了情，只知无愁心。 That's pretty good, 彼 actually. 时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。 What did you think? Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right? We'll all have... Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh. This feels all too familiar. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm. भगा दी उसने उसको. ओ नाइस. इसने नया अच्छा ड्रैगन हेयर वही ड्रॉप करता है. After our trip to Mount Tianheng together, I felt much more. Next time I have a new opera, may we... Now that I'm sure I have much to learn. You've made an exception. I will not forget. टेस्ट नहीं है डाले क्या इन्होंने नए इसमें जेट चैम्बर पे. नॉर्मल जेट चैम्बर बना दिया इन्होंने. बट ये सही किया है, ऊपर डाल दिया है. ट्रैवल करना इजी रहेगा आसपास के एरियाज पे जिनको ट्रैवल करना है. न्यू बॉसेस इन्होंने ऐड भी नहीं किए हैं. न्यू बॉयस आई थिंक यहाँ न्यू बॉसेस इधर साइड होने चाहिए. What the fuck? ये क्या हुआ? अच्छा लोड हो रहा था. Hi there, Tatsuke. How have been your preparation for getting the coral things Kimjing gone? Alas, our work has been troubled thus far. You know, Suyuko, you can make as sad a face as you want, but you are not convinced anyone if you are not glancing at us meaningfully like that. I see you, so you too have realized severity of our situation. In that case, I shall not hide any longer. You weren't hiding anything in first place. We did obtain the key of Moonbath Deep. Yes, Ignomia is slowly awakening. However, we are quite short on manpower. As such, our investigations are proceeding at slow pace. These are uniquely trying circumstances. After all, we do not yet know if relation with Narukami Island will indeed bomb.
But there is a difference matter, you know, knowing that according to tradition, a hero is vital to the process of obtaining the coral. We must set up the base and assist the hero in retracing the path of our ancestor before finally facing the trial. In this manner, we shall build a steady road to victory. Or that was your plan anyway. You can't carry it out because you lack the people. This is absolutely correct, not to mention how we have not seen neither hide nor hair of our most vital character, this hero. But wait, I think I see it now. Our hero has, yes, our hero has the head of blonde hair. This sounds super troublesome. Paimon doesn't think making this trip is a great idea. Exploration usually leads to discovery of rare treasure. I mean, such thing would usually given over to the Sangnumia clan, of course. If you were to find something, why I supposed you would simply close one eye in this. Our hero, our gallant warrior, our paragon, and our savior. Does this mean that you agree then? Well, how could we leave Sangnumia in such strong time crisis? Wonderful. It certain seems to be the method recommended by the Madam Kokomi are quite persuasive indeed. What is persuasive? It is anticipated that you would indeed return to look for me. आई थिंक यहाँ पे जाना है, ये पत्थर के पास. हाँ, इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं. इन्होंने चेंजेस डाल दिए हैं. We call this a key sizzle. It was once hereditary used to throughout Economia. It only resurfaces when the road is about to be opened. This is said to be second set of the key that was sent to people of Batatsumi Island when the economy awakens. Our records show there are total 5 types of key sizzle. At the moment we have found 3 of 5 on the Batatsumi Island. We can then operate them in this manner to return them to their proper places, release the seal. Wait, what? You are not in that outlander category. So we presently unable to establish contact with adventurer guilds, so no adventurers are allowed down there either. There's such historical record. We were looking for win-win arrangement. You don't understand. It's always good to have people whose strong suit is exploration around yourself indeed. So this means that no one is stole a march on us this time, right? Well, how should I put this? I doubt that our temporary barrier restoration was completely foolproof. Some time did pass between our investigated key sizzle located removing them from keyholes, so some rats must have scurred in during the interim. So we are short in manpower. After all, in short, if you encounter any Fatui treasure hunter Kairagi or any other ilk, feel free to teach them a lesson. Wait a minute, if they got down there so easily, what was the point of us getting the mooncake whatever again? Economia will only awaken if we retrieve the key of Moonbath Deep. Similarly, only that key can activate trial systems within. If there are any who did not enter Economia to perform Batatsumi, Goru Matsuri, well, there might be some other twisted winding way to get, who knows. Please retrieve other key sizzle on the island with all haste. Key sizzle have placed at the fin and heart of the Batatsumi as for their two altar. They can be found where the line that connect the other shrine and Sangnomiya shrine intersect the second mountain wall that surrounds the moon path depth.
Okay, the key image known as key sizzle are originated from Economia, and there are total 5 of them. Just as one key fits one lock, each one them can release the seal with the matching images. Collect them and use them well. Okay, तो एक इधर है, एक इधर पे है ना। ये वाला क्लोज है तो ये वाला चलते हैं। इन्होंने एनिमी डाल ही दी है वहाँ पे। आई न्यू इट। मेरे को मिरर मैडम को पहले 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 कहाँ भागी है हरामी? Illusion shattered. Now you shall perish. भाई बहुत टैंकी है भाई। Shine down. I must leave no stone unturned. कहाँ भाग गई? There is no escape. Torn to oblivion. लेट्स सी ज़ाओ कहाँ है? You called? Body and mind. Time to witness the power of Gugwa. Teamwork is strength. Inazuma shines eternal. इन्होंने दी भी नहीं वो। ये कहाँ नीचे है? वेट डोंट टेल मी ये वहाँ पे है। हाइड्रो बॉस के पास है ये वाला। ये पानी के नीचे क्यों दिखा रहा है? कहाँ से एंट्रेंस है भाई? मैं हमेशा इसका एंट्रेंस भूल जाता हूँ। ये एंट्रेंस कहाँ से है? No, how the fuck I go there? वहाँ जाऊँ कैसे? हाइड्रोबॉस इधर भी नहीं है, हाइड्रोबॉस आगे है। और ये मैंने मार्कर काहे का लगाया है? पर्ल्स का मार्कर है। नहीं, पर्ल्स के लिए क्यों मार्कर लगाया मैंने? नीचे कैसे जाऊं पे? इस सिजल इन्होंने पानी के अंदर डाल दी है। हाँ, देयर मस्ट बी अ वे टू गो नीचे जाने के लिए। वाह, फटुईज यहाँ पे बैठे हुए हैं।
इधर आओ बे दोनों के दोनों। Rain outlines your fate. Huh? Let me weave you a verse. कहाँ गई थी ये? I'm going in. Shine down. Useless. Disappear. Worthless. Here. भाई ये हील कर रहे हैं, भूल ही गया था मैं। There is no escape. Boring. Rain outlines your fate. Huh? Rain cutter. Teamwork is strength. Shine down. Torn to oblivion. Illusion shattered. That's it. Lament! Out of my sight. Here! Worthless! Here! वाह मिड एयर हिट करी इसने। Let me weave you a verse. Everybody stand back. कहाँ भाग गई? Inazuma shines eternal. जाने दे। मटेरियल तो ड्रॉप कर देते, इतनी मेहनत करवा रहे हो। Useless! हील करने भी जाना पड़ेगा अगले में, ये मर जाएगा नहीं तो ये बेचारा। जाओ। Useless! Now it's time to release the seal, and here take the key of moon bath deep to you retrieved before. Key to the moon bath deep. Say that again 3 times fast. Key of the moon bath deep. Key of the moon. Okay, it's a bit tough, Twister. Told you that it was weird name. You should consider changing it. Even if we do change the name today, it will be important again a few centuries down the line. Just bear with it for now. I'm going to begin the ritual now.
नाइस, नया एरिया खुल गया. Unfortunately, we don't have any details as to the nature of Economia's trial, so you will have to rely on yourself there. If we must blame anything, we should blame stupid tradition that are supposed to be preserved mysteries. I wish you good luck. Also, please do not push your ship too hard. Your safety is utmost importance. Okay, bye. प्लीज डोंट टेल मी मैं गिर के मरने वाला है. ये क्या बवासीर है बे इधर पे. भाई कितने पर्ल पड़े हैं यहाँ पे. और ये अंदर ट्री क्या कर रही है. इकोनॉमी है ये, पानी के अंदर एरिया है, इसके अंदर ट्री क्या कर रही है. इसकी ट्री डिफरेंट है क्या. यू मायरू है ये तो नॉर्मल ही है. ये नई फिशिंग स्पॉट है. ओके एंड आई थिंक ये वाला लगेगा इनको. आई थिंक नए वेपन वगैरह आएंगे इनके, ये अगर फिश इन्होंने ऐड किया तो कुछ तो होगा सीन इनका. ओ ओ ओ पायमन चिल्लाना बंद कर मेरे कान में. ये क्या है फॉर्मेलो रे. ये कैसे कैसे दिख रही है. चेहरा इसका कैसा है. अजीब सा है. Steady now. It's the final stretch. What is it? What is it? Is it another Paimon? आई होप इसको भी यही वाला लगता हो, क्योंकि ये फिश तो सेम ही है. हाँ यही लगता है. बट येलो वाली डिफिकल्ट है कैच करना. जल्दी जल्दी करती नहीं है. So close, so close. Stay cool. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. डिवाड़ा रे. वाह. वेट नहीं ये तो सेम ही. ये अच्छा सेरेनिटी टी पॉड वाली आ गई है एक और. ये जो जंप कर रही है इसको तुम सेरेनिटी टी पॉड पे रख सकते हो. This would be difficult, I think. ये अब डिफिकल्ट है, ये नॉर्मल से. फॉर्मेलो रे. वाह 2 मिले हैं. ये 2 का क्या करूँगा. एक ही काफ़ी है मेरे लिए तो. So this is economy. It's just like the no traces of civilization at all. How can that be? Go deeper into the cave. What?
द फक, ये क्या घूम रहे हैं इधर पे? वो दैट्स फिशी, दैट्स वेरी फिशी. Witness the power. I'm going in. Shine down. Let's light it up. ये क्या है? स्टडी बोन्स ड्रॉप किया इन्होंने. आई थॉट ये डिफरेंट कुछ ड्रॉप करेंगे. सुजय भाई क्या हाल है? अभी आज बीजेएमआई नहीं खेल रहा हूँ. नहीं, आज बीजेएमआई नहीं खेल रहा. थोड़ा इस गेम में अपडेट आया होता तो मैं बोला इसको खेलते हैं, बिकॉज काफ़ी बढ़िया अपडेट आते हैं जब आते हैं इस गेम में. तो सो दैट्स वाई आज हम ये खेल रहे थे. कल खेलेंगे वापस से. प्राइमोडियल वाइशमल विसाप, ये क्या है और ये क्या हो रखा है? प्रेडेटर दैट लाइज इन वेट विद इन द पिच डार्क watery depths. It appears to have adopted some unknown power out of the depth sea, such that it can use elemental other than hydro. When it faces strong foes, it will use its powerful cleansing shower. Character hit by this attack will lose a certain amount of elemental energy. If they do not have sufficient elemental energy, they will lose HP. माँ की आँख, ये क्या बवासीर है बे? वाह, इसने मेरे को फोबोनियस कोडेक्स दिया है. ब्रो कल वो एक बंदा नहीं था आपके साथ जो रूम में खेलने को बोल रहा था? अच्छा, इन्फिनिटी की बात कर रहे हो तुम? हाँ होगा, वो अवेलेबल होगा, ऑनलाइन होगा, खेल रहा होगा किसी के साथ आई थिंक आज. देखो ना उसको, अगर फ्रेंड लिस्ट में तुमने ऐड किया था उस दिन तो होगा वो. देखो ना, उसे पूछो. खेले नहीं क्या बाद में तुम लोग 1v1 आपस में? ये सब बाद में करूँगा मैं, ट्रायल आयल. वो ये क्या है ऊपर? भाई ये कॉमन चेस्ट क्यों रखे हैं इन्होंने यहाँ पे? ढंग के चेस्ट कहीं नहीं डालते ये गेम वाले. वो ये क्या है? अभी मेरे साथ खेल रहा था रूम में, रो रहा था, बोल रहा था कि तुम हैकर हो. क्यों? ऐसा क्या कर दिया भाई कि हैकर बोल रहा था तुमको? Let's do that. Excellent. These spoils will boost ऐसा क्या कर दिया भाई उसको कि हैकर बोल रहा था तुमको? Conquering demon. वो ये क्या है? What the fuck are you guys? ना भाई, लड़ने नहीं है मेरे को, बिल्कुल मन नहीं है भाई. जाना कहाँ है मेरे को ये बताओ पहले. मेरी 17 किल, उसकी 0. अरे मजाक में बोला होगा बे हैकर.
Few it sure took a while before we saw anything resembling civilization. Let's get closer and have a look. आज आईफोन 12 मैंने खेल रहा था तो मार के एक कर दिया उसकी. Higher elemental concentration have resulted in creation of floating creature. When it takes a single grievous hit, it will build fury. Electro Spectre. भाई बहुत बड़ा एरिया है भाई, ये हद से ज़्यादा बड़ा एरिया है. नहीं ब्रो, फाइट हो गई थी. हो ही नहीं सकता भाई, वो सीरियस हुआ ही नहीं होगा. मैं मान ही नहीं सकता कि वो सीरियस हुआ है. 5 symbol on the big door must be the key sizzle. Let's have a look around from what we have experienced in the past. We'll probably need to do something else first. ओ यहाँ पे सिंबल बने हुए हैं पत्थरों पे. वेट, क्रायो, इधर आओ बे. फ्लोटी फ्लोटी, इधर आओ. क्रायो बनो तुम लोग तो. ओबे जमा दिया भाई इन्होंने. तुमको मारना ही पड़ेगा, तुम लोग बहुत अनोइंग हो. जाने दे भाई. ये क्या है, पानी के अंदर गांड मार लेंगे भाई. ये तो हाइड्रो स्पेक्टर के साथ साले ले लेंगे लोगों की, अगर इनको हाइड्रो स्पेक्टर के साथ डाल दिया इन्होंने तो. सच में भाई रो रहा था वो. मैंने वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो सेंड करता आपको. बंदा रो रहा था. Time to act. Body and mind. देखो मैंने तो देखा नहीं तो मैं क्या बोलूं. मेरे को बट जितना पता है इन्फिनिटी के बारे में, वो रो तो नहीं रहा होगा. ऐसा नहीं होगा, मतलब लड़ाई नहीं किया होगा. रो जरूर रहा होगा, लड़ाई तो नहीं किया होगा. All I can say. I knew it कि एक और यहीं होगा. एक और वो रहा, जहाँ जहाँ लाइटें दिख रही वहाँ वहाँ है ये. और कहाँ है? ऊपर जाना पड़ेगा टेलीपोर्टर के पास. वहाँ पे एक था, बाजू में होना चाहिए एक और हमारे. Time to act. Body and mind. ये कहाँ है? ये तो सिली है. वो बोल रहा था कि कल रूम बनाऊंगा फिर से सूझा भाई तो लेके. क्या Body and mind. भाई अभी तक 3 ही मिले हैं भाई. मतलब सॉरी 3 ही एक्टिवेट हुए हैं, 2 अभी भी मिसिंग है. कहाँ पे है ये?
शुजा भाई के साथ। मेरे साथ क्यों रूम बनाना भाई? मेरे को काहे बीच में डाल रहे हो अपने? तुम्हारे बीच में जो तुम लोग का जो भी 1v1 का था, मेरे को काहे भाई फंसा रहे हो भाई? मेरे को मत फंसाओ। क्या ही प्रूव करोगे प्रूव करके? बोल रहा था 5 लोग देखेंगे। रुक जा, मैं उससे बात करूंगा, मेरे को देखना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया क्या हुआ है तुम्हारे बीच में। क्रायो स्पेक्टर। ये मैप को क्या हो रखा है? ऐसे ग्रीन ग्रीन लाइनें क्यों आ रही हैं मैप में? ये क्या हो रहा है मैप में? भाई ये कहाँ है लास्ट वाला? नाउ हाउ डू आई फाइंड दिस बुलशिट? Time to act. चार तो एक्टिवेट कर दिए हैं, पांचवा है कहाँ? ये भी एक्टिवेटेड है। एलिमेंटल साइड पे भी नहीं दिखने वाला ये। Body and mind. मैंने उससे बोला भाई तू रो मत। Time to act. चलता है रे, हर दिन थोड़ी ना होता है किसी का दिन। हो सकता है उस दिन वो बेकार खेल रहा हो। आओ बे, उठो बे तुम। बोर हो रहा हूँ मैं क्योंकि तुम्हारे चक्कर में। Body and mind. No, my sword. Let me weave you a birth. Everybody stand back. Disappear. Worthless. Here. 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 Worthless. Here. Illusion shattered. Adventure time. ये रहा लास्ट यहीं पे है। माँ कसम दिख भी नहीं रहा भाई, ये लोग इतना इतना धीम ऐसे बना के रखे हैं। फक भाई, ढूंढने में ही लग गई मेरे। आई लाइक जाओ, मस्त है उसका गेम प्ले। आई थिंक इससे इंटरेक्ट करना है अभी। यप नहीं ब्रो, कल मैंने Redmi Note 4 पे खेल रहा हूँ तो हार गया था मैं। Adventure time. ये क्या बात है? Redmi Note 4 पे खेल रहा था तो हार गया, और उस पे खेला iPhone पे खेला तो जीत गया। Rain outlines your fate. Rain cutter. Teamwork is strength. Ha! There is no escape. Useless. Lament. Worthless. एनर्जी तो सही आ रही है जाओ की। राइडन सोगन के साथ मस्त एनर्जी वापस दे रहा है यार ये तो जाओ।
एनर्जी की दिक्कत आ ही नहीं रही है मुझे जाओ के साथ। जाओ में बिल्कुल भी अल्ट चार्ज हो जा रहा है बार बार उसका। ना व्हाट द फक इज दिस? यहाँ पे छुपा हुआ की जगह है वो। Now what are you guys hiding here? Adventure time. Let's come on. आजा आजा। Let's light it up. No, my sword. Witness the power. Illusion shattered. इधर आओ बे, तुम तीनों लाइन से लगो। Inazuma shines eternal. Useless. Evil conquering. Worthless. Here. Here. Worthless. Here. ब्रो वो बहुत ओल्ड फोन है इसलिए हार गया था। FPS नहीं आता है उसमें। iOS में मार के कर दी भाई को रो रहा था। कल उसका दिन था आज मेरा दिन था। हाँ ये कह सकते हो, कल उसका दिन था आज तुम आज तुम्हारा दिन था। That's a fair statement. भाई यहाँ पे वो नहीं है क्या, स्टैचू ऑफ 7 नहीं है क्या? डोंट टेल मी यहाँ पे स्टैचू ऑफ 7 है ही नहीं। Body and mind. आओ बे फ्लोटी फ्लोटीज। Ring cutter. Everybody stand back. There is no escape. Useless. Even better than I imagined. It's my lucky day. What are you hiding here? Wait, ये क्या है बे? ये क्या है? यस टच स्नेक का स्टैचू क्या कर रहा है? Rain outlines your fate. Torn to oblivion. भाई ब्लॉक कर लिया उसने अल्ट मेरा, हरामी ने। हरामी है भाई। Teamwork is dream. Lament. Worthless. Worthless. Here. Evil conquering. There's quality here. ये क्या और है? नहीं और नहीं है।
That's pretty good. Look like our goal is that place in the middle. Alright then, let's head in and study now. Those ruins seem to be closer to us. Let's start there. Buildings means people. Once upon a time anyway. Where are there people? There will be a riding. Where there are riding people, there are those the hint we can even read. That means यहाँ पे अंदर पे वो भी नहीं चलेगा, अंदर पे गैजेट भी नहीं चलेंगे मेरे? नहीं वर्क कर रहा है। ओ ये वर्क कर रहा है एक्चुअली में। दैट्स नाइस एक्चुअली कि वर्क कर रहा है ना। यहाँ पे मेन टेलीपोर्टर तो है ही नहीं। हील कैसे करेगा आदमी यहाँ पे रहेगा तो? और जाऊँ कहाँ? नीचे मुझे लगता है डूब मैं गिर के मर जाएगा। हाँ ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऊपर से कहीं से निकलना पड़ेगा। Now what the fuck is that? वो क्या है ब्रिज के नीचे? ये ब्रिज के नीचे है क्या? Now what the fuck are you, man? ये क्या है? Let me see. Can I catch this creature, please? You are mine. Pokeball go. एनर्जी एलिमेंट मिला है, कैच भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? एलिमेंटल एनर्जी ड्रॉप कर रहा है। जो भी था वो कुछ जो भी था वो। तो चिलगोज़ो के ऊपर तो मैं अल्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। कुछ भी बोलो, इन्होंने डिजाइन बहुत मस्त किया है। उन्होंने टाइम जरूर लिया लेकिन डिजाइन बहुत मस्त किया है मैप को। दिखने में अच्छा है और यहाँ पे कुछ है, आई थिंक सील टाइप की है। आई सपोज इट शुड बी समवेयर अराउंड हियर। $10,000 मोरा फ्री के। न्यू आइडिया उठेंगे। सारे इधर आओ, सारे इधर आओ साथ में। पहले अरे मेरे को फंसाते। इधर आओ। Illusion shattered. Inazuma shines eternal. All dead. यहाँ पे कुछ तो है बट दिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा ऊपर है वो। टॉप पे है। की सिजल पास डाउन थ्रू द वात्सुसुमी आइलैंड। नाउ किसकी की सिजल है तू? क्वेश्चन ये है मेरा। मिल तो गई है मुझे बट लगेगी कहाँ?
Let me heal him. Body and mind. Go to the ruins ahead. Time to act. Body and mind. ना ये क्या है? साले तुम मारोगे नहीं, मानोगे नहीं, मतलब है मार के ही मानोगे। सीढ़ी के जाओ का दिमाग खराब करते हुए हैं। निक्का जिसका मैं कोपचे से जा रहा था, अकेले अकेले जा रहा था, फालतू परेशान करते हैं। चला इसमें यहाँ पे हील करने का सिस्टम भी नहीं है, रिस्की है ना। 2 और सिजल हैं यहाँ पे, बट कहाँ पे हैं? आई थिंक ये दूसरी साइड है, कहीं ऊपर पे ही होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये रिवॉर्ड के लिए है की सिजल। यप, रिवॉर्ड के लिए ही है। नो ये क्या है बे? और ये सिली कहाँ चली गई? सिली कहाँ चली गई? अच्छा वहां पे है तो। शील्ड हटा दो, भाग इधर से। क्या वजह इसको देख के कितना खुश हो रहे हो तुम लोग? Adventure time. Oh nice. चेस्ट के लिए था ये सिजल्स। ओह नाइस। नए नए मैकेनिज्म ऐड किए उन्होंने चेस्ट पाने के लिए। अब वो सिली यहाँ लेके आनी है। भाई मेरा स्टैमिना इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जा रहा है? Body and mind. Treasure hunting, a valiant endeavor. यहाँ क्या है? This looks like a way. Rain outlines your fate. Let's light it up. I suppose this is a white iron. हाँ, white iron chunk है. Adventure time.
No, what the fuck? Let's light it up. Even better than I imagined. It's my lucky day. Seems to be in right position. Okay, so I think जो सबसे नीचे है इसको पहले करना है and then इसको नहीं 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 I think बराबर लाना है इसको. ये सबसे ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा and I think एक और. This seems to be right position. What? What am I supposed to do here? I'm confused here. Is there any clue here? पीछे lights नीचे हो रही हैं. इनकी पोजीशन तो सही है. I think एक ऊपर होना चाहिए, दो नीचे होना चाहिए. I think या फिर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा and then ये नीचे आएगा. Off we go. Confused. I'm confused. ये क्या है? ये कैसी puzzle है? No, my sword. There is no escape. बाद में देखेंगे. ये जगह मार्क कर लेते हैं, मैं भूल ना जाऊं क्योंकि और मैं आया कहाँ से था? ए यार, उतना चढ़ना पड़ेगा ऊपर. ना मैं ऊपर चढ़ूं कैसे अब? नहीं हो रहा. ऊपर चढ़ूं कैसे अभी? मैं जाऊं कैसे ऊपर से? पूरा घूम के जाना पड़ेगा मुझे. पूरा घूम के जाना पड़ेगा, बताओ. Rain outlines your fate. यहाँ पे ये नई मैकेनिज्म और है, ये जहाँ पे ये लोग खुदाई कर रहे हैं. ये भी एक नई मैकेनिज्म है. आई डोंट इवन नो कि वो क्या है. ये भी एक गेट टाइप का ही लग रहा है मुझे. Time to act. No, my sword. Rain outlines your fate. Rain cutter. Shine down.
but a momentary They are guarding something. आओ बे, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ. Everybody stand back! Illusion shattered! Let's light it up! Useless! Lament! Worthless! Worthless! Here! Worthless! वाह भाई, पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है हरामी. There is no escape. Now you shall perish. Now what the fuck, ये क्या है? अंदर कैसे जाएगा आदमी? अंदर कैसे जाएगा? आई थिंक ये बैरियर बाद में खुलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. बहुत सारी चीजें बाद में खुलने वाली हैं. अभी ये क्या घूम रहा है यहाँ पे? ये सीजल है कहाँ पे? और आई थिंक ये अंदर है और गेट लगा हुआ है. आई बिलीव सो. Subterranean trial of Drake and Serpent. Investigate the ruins ahead. अरे जा रहे हैं चचा, कहीं पीछे पड़े हो हमारे. No, my sword! Ring cutter! Everybody stand back! Useless! Shine down. अब ये क्या है? Examine the mechanism and open the great door. Okay, fair enough. That was easy. अभी तक मैं वहाँ कर रहा था तो मेरे को पागल बना रहे थे ये लोग. The ancient book of full of words you cannot decipher. Ancient word that cannot be deciphered. भैया टेढ़ा क्यों है? और मेरे को ये जानना है, ये अजीब सी फीलिंग दे रहा है. टेढ़ा है ये एरिया. और आप कौन है चच्चा यहाँ पे? Oh, trying to trespass, are we? Wait, maybe not. I correct myself. You two must be the heroes who have come to retrieve the coral this time, are you not? Well, I was originally thinking that Sangdam science couldn't possibly be too short-handed, that they are only sending one person, right? So I consider my expectation exceeded. There are actually two of you. I love your gusto and optimism, good stuff. I hope that by the end of this, you will count me in the team as well. I'm sure three of us can get swimmingly. Let me introduce myself. I'm a researcher who just come to assist you. Call me Enzo.
My duty is to organize and translate clues regarding the trial and guide you on your path. Oh, that's nice. We already had to rely on our own memory to figure the puzzle we encountered out. Wow, you know what? You might actually be more personal than me. Then, I mean, I am just a scholar. It would be quite a stretch to accept you will learn. बाय कुआ ही क्या स्क्रिप्ट है बे क्या नाम है बायाकू बायाकू याकू कू भाई 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 very tough name. That's where I'm here to help you translate document hint and any question for me. What do we know about the central tower? That's the heart of the trial, the building known as Danichi Mikoshi, which also means chariot of the sun. I believe that it should be defended by the barrier right now. Its original purpose was to protect the citizen, but at present we cannot enter unless it is disabled. Now I see the question bubble up in your face already. So let me explain how we're going to break the barrier. First you need to find something known as golden bridle. According to related literature, it's a device that less than armful in size. Moon and sun were moved by the chariot of the god, and golden bridle was the Baikuku's national treasure. That's right, Baikuku. That's the real name of this place, the Nether Realm without light. Baikuku is the place where the sin piled high in the high evernight, only to cleanse and reveal their true colors. Back to the trial, the people of Baikuku were saved by the great serpent, thus re-attained the light of heaven. They all moved above the depth. So just to know, that's why the means above the depth. Anyway, the people of Atsusumi achieved the Baikuku facility after leaving the place. As for this place, this is the one for those facility, the library of Baikuku. To facilitate future trials, Golden Bridle was moved closer by, to the back of the library to be exact. To finding the Golden Bridle is the first part of the trial. Well, this is what the trial guidebook in the library says anyways. Oh, that's you. You are the yours rough and narrow road up on the front gate of the trial. As for support, we have on our side back door. Anyways, for more Pelavian persuasion. ये क्या होता है Pelavian persuasion? Who managed to sneak in isn't got get very far. Without the key of moon bar deep to open the gate, the trial and its content will not activate. Plus, it's not as if ordinary people would understand Bakugo's threat anyway. And one other thing, I believe that this picture behind me matches Economia topography. I suggest you study carefully before you heading out. Oh, so that's how you open the map. That's pretty nice actually. And it's a big map. It's a very big map. It's not just a big map. It's a very big map, dude. Now where is the teleporter? Where is the teleporter? Go to the back of the library, seek out for the golden bridle. Now what the fuck is going on? मैं यहाँ पे हूँ और टेलीपोर्टर कहाँ पे है? फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरे को टेलीपोर्टर ओपन करना था ये वाला. Adventure time. Off we go.
भाई ये कंफ्यूजिंग प्लेस है बहुत ज़्यादा, मैं तो घूम जाऊंगा इसमें। Can I change the time here? Can I go night? Let's see नाइट में क्या होता है, क्या चेंज होता है अपने आप ही नाइट, या फिर तो करना पड़ेगा। नहीं हुआ चेंज। Off we go. Adventure time. Off we go. Let's light it up. Illusion shattered. थैंक्स फॉर द मास्क। और ये यहाँ क्या कर रहा है? बिग हिली चुरल कहाँ से आ गया यहाँ पे? भाई कोई भी एंटर हो जा रहा है भाई यहाँ पे, है बताओ, इज्जत ही नहीं है प्लेस की। आओ भाई तुम इधर आओ। Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. तुम इधर आओ। Teamwork is dreamwork. Disappear. Here. Worthless. Here. Worthless. Worthless. Here. Shine down. No, my sword. भाई गन जाओ का लेवल अप करना पड़ेगा भाई। जाओ मर जाएगा नहीं बेचारा, कसम से मर जाएगा बेचारे की जान निकाल लेंगे ये लोग। नो कहाँ की तू सिजल है, पहले ये बता मुझे, कहाँ की सिजल है तू? आई नो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वेट व्हाट, वहाँ पे इतनी लाइट क्यों है? और यहाँ शीली लेके आनी है। Aha, I knew it. You are hiding somewhere here. Something here. आओ बे इधर आओ। Rain outlines your fate. I'm going in. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Evil conquering. Here. 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 Worthless. No, my sword. Let me weave you. Give me back my energy. Treasure hunting. A valiant endeavor.
ये एरिया इतना ब्राइट क्यों है? बट Body in mind. ओह, तो ऐसे गेट खोलना है. आई सी नाउ. Obtain golden bridle. Treasure hunting. A valiant endeavor. ओह नाइस, 5 प्रीमो मिल गए. भर भर के प्रीमो दिया है इन्होंने. डल गोल्डन ब्रिडल. Now how am I supposed to heal myself? If you're good with artifact, can you check my Ayaka and with my artifacts? I don't have Ayaka, dude, so it's hard for me to tell which artifact is good for Ayaka. So I might not be able to tell you the correct thing about Ayaka, you know, because I don't have an Ayaka in my possession right now. ये सही किया है. 20-20 10-10 हज़ार मोरा मिल रहे हैं लोगों को, चाहे 3-3 4-4 हज़ार से बेटर हैं. But I think you need Blizzard Slayer for Ayaka, right? Blizzard Slayer, 4 piece Blizzard Slayer. Before this, the people lived in the constant state of fear. It was the great hunter in the dark, the Batsmal Visab, who were original ruler of the land. Yes, pure primordial elemental creature, wild spirit, would never bend knee in any god or worldly power. I believe that's the traditional Sagnomia tale. Class of drake and serpent, also refers with Batsmal, Vishap as a dragon hair of the depths. At first, the people would light the lamp to chase the dark away, but little effect. But when the Danishi Mikoshi was created, the white night chased the darkness of ever night away. Thus did the people gain the reprieve which they live their lives. In Danichi, Mikoshu could even be used to put the barrier to protect the people of Baikushu. With this, we should be able to bring the barrier down. Let me help you activate it. According to what book says, I need to do this, and then this, and then this. Okay, this should we do. Then we should probably perform such a portentous deed at our utmost gate of Dainichi Mikoshi, wouldn't you say? Main gate should be on southern section of the area. It occupied by the circle the barrier a bit till you find it. Economy is surrounded by bottomless chasms. If you fall, you can count to hundreds without ever hitting the bottom. So please watch your step. In any case, if you find the place, just circle around the barrier for a bit. You will get 3 eventually. Almost done with my investigation here. I haven't found what I am looking for, though so I will go ahead to wait for you. How come this guy is surviving here? I still have a doubt. गड़बड़ लग रहा है बंदा मेरे को. Time to act. Triangular mechanism with certain distance
Attack can be used to activate the mechanism. These mechanism will reset after a while. If you find that mechanism is currently damaged, try switching to Evernight. They will fix themselves right away. Right up. Oh. Useless. Rain outlines your fate. Witness the power. Let's light it up. Everybody stick. There is no escape. Let's light it up. Adventure time. Lament. Tear. Worthless. Worthless. Time to act. Body and mind. Why you bully me, sir? No, my What's your problem, sir? Let's light it up. But a momentary distraction. Zhao को ये साले लटका देते हैं हवा में. That's going to be a problem in the future. स्टेमिना फूड खाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है. यूजुअली खाता नहीं हूँ, बहुत जल्दी स्टेमिना जा रहा है मेरा. भाई भाई Transcend all constraints. भाई मैंने क्या डैमेज कैसे खा लिया ये वाला. Rain outlines your fate. Rain cutter. Teamwork is dream. Illusion shattered. Not good. Let's light it up. Disappear. Here. Here. What's wrong here? यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं है ये? No, my sword. Rain outlines your fate. ओ भाई सही पार्टिकल दे रहा है बे. जाओ. Even better than I imagined. It's my lucky day. मतलब यहाँ पे मल्टीपल सील्स हैं.
ये वाली सील विजिबल नहीं है for some reason. 3 सील तो मुझे ही दिख रही हैं, और कहाँ हैं? तो टेलीपोर्ट मार इधर, टेलीपोर्ट मार जल्दी इधर, मैं टेलीपोर्ट मार। क्या कर रहा है? Let me weave you a verse. Rain outlines your victory. Let's light it up. Useless. There is no escape. अबे कहाँ है भाई, ये छुपा के काहे रखते हैं इतना? ना कहाँ मिलेगा ये? आई थिंक मुझे स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा ये वाला। नहीं तो डे और नाइट कर ही नहीं पाऊंगा मैं, मिलेगा ही नहीं मुझे आधी चीज़ें। No, my sword! Rain cutter! Let's light it up! Everybody stand back! Lament! Worthless! Here! There is so much to explore in this world, in this update. Why would anyone want... Forget it. It's not my concern. ले लेना चुपचाप, काहे हल्ला कर रहा है? जाओ, रहता ही रोता है, रहता है जिंदगी भर। खाने को तो रोएगा। Now what the fuck are you? ओह टेलीपोर्ट पॉइंट है ये तो। अच्छा टेलीपोर्ट पॉइंट है ये। Excellent. Body and mind. No, my sword! Witness the power. I'm going in! Shine down! Now to where? एक सेकेंड, मैसेज आया है क्या? अच्छा ये चला गया सोने। ईवल, आई थॉट ईवल है।
Ghost fish. The school of ghost fish will surround you when you are within them, allow you to continuously glide but watch your positioning. If you find yourself outside the group, the added lift will lost. मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या है इसका? Oh, it's like a that's nice way. That's a new mechanism. I like it. ये कॉन्स्टलेशन ओपन नहीं किया. उसके अलावा कॉन्स्टलेशन किसी का नहीं मिला है. चौंगन ही चौंगन भर भर के मिला मेरे को. If it's useful, I'll take it. बैरियर है अभी यहाँ पे. ये क्या है? अच्छा, ये एक्टिवेट नहीं करा जा सकता. Now to where? आई थिंक यहाँ पे जाना है, क्रॉस करना है. That's on a weird spot, I says. ओ, मेरे को सिर्फ कंट्रोल करना है. ये अपने आप ही ले जाएगा मेरे को ऊपर तक. That's nice actually. ओह, दैट्स नाइस. मैं ऊपर आ गया, वापस ऊपर तक आ गया. टेलीपोर्टर भी खोल लूंगा अब मैं. What the fuck is फटोई doing here? फटोईस कहाँ से आ गए बे यहाँ पे? हमको इतनी मेहनत लग रही है, फटोईस ऐसे ही आ जाते हैं. बताओ, मजाक बना रखा है इन्होंने फटोईस ने यहाँ पे आना. मतलब हमसे इतनी मेहनत कराते हैं और खुद इतनी आसानी से कर लेते हैं. वो क्या है? डोंट टेल मी दैट्स अ अबिस लेक्टर. अबिस लेक्टर है ये. हाँ, अबिस लेक्टर है ये. Should I fight? Yes, I should fight. Behold, the abyss has come.
Time to act. Let me weave you up. Let's light it up! Illusion shattered! Now ye shall perish! Disappear! Here! Worthless! Here! Worthless! Here! Rain outlines your fate. Let's light it up! भाई इसके शील्ड तोड़ना सबसे बुरा तो बोरियत वाला काम है। इधर आ बे, इधर आ वो थोड़ी के। भाई अब इस लेक्टर को इन्होंने ओपन वर्ल्ड में क्यों डाल दिया? इसने मेरी एनर्जी रिड्यूस कर दी। भाई एक तो एक कोने में खड़ा है बेंच, वहां से हिलना कहीं और जाता कि मेरे को अटैक करते बने। इट्स रियली हार्ड टू अटैक यू। मर गया। हटता ही नहीं है। There are 2 rows of text on this tomb headstone. The first row is in script of Baikuku and which is unillegible. Second row is common script. It goes as follows: Here lies Ion no Mikotsu versus in fortune telling sizzle sign, but Wu often predicted falsely, never errantly, only when reading the spawn on years. पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे कुछ भी। क्या लिखा था उस पे? Now where is the quest? Off we go. मेरा लड़ने का मन नहीं है। मैं लड़ेगा ही नहीं, इग्नोर मारेगा तेरे को। मैंने देखा ही नहीं तेरे को आते हुए। मैंने देखा ही नहीं तेरे को आते हुए। On the gate. No, ये क्या है? There is something down there, but कैसे एक्टिवेट करूंगा इसको? Very sus place. ओ नहीं। What the fuck? भाई इन्होंने टेलीपोर्टर फिक्स नहीं किया भाई।
टेलीपोर्टर तक फिक्स नहीं किया अभी तक इन्होंने, कई बार इंटरेक्ट ही नहीं होता टेलीपोर्टर पे। Not again. बैनेट चल, तेरा लक ट्राई करते हैं। बैनेट का लक वर्क कर गया। Adventure time. Ah, so here, allow me to help you shut down the barrier. Could you pass me the golden brittle? Huh? Still suspicious of me? Well, Enzo, don't you think you're a bit quick on your feet? Ah, come on, that's a heartful talk. Though I suppose there's a sight of literally researcher bouncing about the place happily is rare one. But come on now, I didn't deceive you earlier, did I? Well, that's true. We couldn't have found the golden brittle without your help. You can hold me this sword point or hit me to make up for the point. But once you're done with that, I like to trust me. If you don't, none of us going to be enter the Nichimikoshi. Are you too type of to enjoy getting beaten up by something? Not that Paimon going to do. What do you think, Suja? Wait, just a moment there. You're joking, right? Okay, okay, stop scaring him already. Just give him brittle, Suja. Blast could send you tumble in bottomless chasm, or feet here might make it hard to breathe, or maybe some giant guardian dragon might have come charging out, or I might even get cursed and turn into some sort of flaming flinging monster. That means ये abyss, ये दूसरा वाला abyss है क्या? पायरो अबिस है क्या? मेरे को अभी तक पायरो अबिस मिला नहीं है, इलेक्ट्रो अबिस मिला है। आई थिंक ये पायरो अबिस है। Off we go. प्रीमोज हुए क्या? हेलो, क्या बोल रहा है? कितने प्रीमोज हुए? देखा नहीं अबे। बट एनफ होंगे वे, बहुत चीज़ें अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जो कि ओनली क्या कहते हैं उसके बाद ही खुलेगी, स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद ही खुलेगी। तो अभी होगा, बहुत एरिया हैं जो कि क्लोज्ड पड़े हैं जस्ट बिकॉज की स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीटेड नहीं है अभी भी। तुमने कर लिया एक्सप्लोर? नहीं रे, मैप दिखाना। बोला ना बहुत बड़ा मैप है, और प्लस इसमें ना अंडरग्राउंड हिडन चीज़ें भी हैं। हर मैप में ऊपर ही बस नहीं है सब कुछ, अंडरग्राउंड हिडन भी है, तो बहुत बड़ा मैप है। नाइस।
अच्छा वो एप्पल वाला जो आया था एक मैप वैसा ही टाइप था ना ये भी? मैंने तो खेला ही नहीं है वो एप्पल वाला। कौन सा था, मैं वो भूल गया। आर्कियोलॉजी वाला कौन सा था वो? गोल्डन एप्पल आर्कियोलॉजी ना, यही था ना क्ली वाला। भाई बहुत अनोइंग है भाई अविस लेक्टर्स भाई। अविस हेरल्ड बहुत अनोइंग है कसम से, स्पेशली जब सील्ड मोड में जाते हैं। फिनिशिंग में नाइस वन। रन लो रन। Rain outlines your fate. There is no escape. For it. Illusion shattered. Off we go. तेरे पास तो जाओ ऑलरेडी है ना? होल्ड यू रन। क्यों फिनिक्स, तेरे पास तो जाओ ऑलरेडी है ना? किसके पास? तेरे पास नहीं, तुमको मिल गया ना? हाँ, आई थॉट तेरे पास ऑलरेडी है। नहीं, मेरे पास जाओ। आओ बे, तुम इधर आओ, दोनों के दोनों इधर आओ, बीच में आओ। नो लड़ाई, दोनों को साथ में देंगे बत्ती। No, my sword. Let me weave you a birth. I'm going in. Evil conquering, worthless. अरे स्विच करने दे मेरे को राइडन में, क्या मूव नहीं करने पर मैं। भाई कुछ नहीं दिख रहा भाई, क्या अटका दिया इन्होंने। भाई कहाँ दीवार पे अटक गया मैं। अल्टी मार दे। अरे अल्टी छोड़, मैं गंदा वाला अटका दिया भाई, मेरे को दिख ही नहीं रहा कुछ भी क्या चल रहा है। यहाँ पे तुम अंदर हील भी नहीं कर सकते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ये देख अंदर का मेन टेलीपोर्टर दिख रहा है तेरे को? कहाँ? नहीं नहीं कर सकता तो हील। तो बैनेट का अल्टी मार के हील कर। वही चॉइस है, उसके अलावा चॉइस नहीं है अंदर हील करने की, या तो खाना खाना पड़ेगा। या तो बस 2000 का टिक तो पड़ रहा था। Time to act. और कोई है? लो क्या? नहीं मैं पूछ रहा था और कोई लो तो नहीं है? पीछे कोई चेस्ट है सर? नहीं मैं बाद में लूंगा, वो बहुत सारे चेस्ट मैंने छोड़ के आए हैं। वो बोला कि स्टोरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिकॉज नहीं तो खुलेंगे ही नहीं बहुत सारे पजल, तो फायदा ही नहीं है लड़के। स्टोरी क्या है? गो टू द यहाँ वर्ल्ड बॉस खुलेगा ना इसके बाद। तो ये पूरा ठीक है। नाइट हो गई, ओके डे टू नाइट कन्वर्ट हो गया। घोष Due to its property as nether realm, sometimes project shadow of the past based on the remnant thoughts. Though their stories have been already ended, who they were at the moment is captured and retained. They can be interact with you. Such powerful emotions are called sins of Tokyo. Those unique ley line phenomena are known as sin shades and shades of Tokyo. So my current form will be visible to future heroes as well then. That's good to know. Guess I don't have to be nervous. After all, the future me is going to act based on the current me memories. What's the world is talking? Ah, it seems like our hero are alive. Hello there. My Batatsumi name is Aru. My original Bakuku name is Aragos.
I am charged of explaining the next step of the trial, which is to restore the realm of revival, display our royal right over this land. The reign of revival are an ancient treasure that can be used to command the spirit of Nether to speak. They are made of some same material as the Danichi Mikoshi. The rain must place together with golden brittle as the core. As such, you need to find other three fragments. If you have any other question, feel free to ask. I believe my leftover spiritual essence should be able to answer your question. What is that? Then do you like some fresh fish, Simi? Ah, that reminds me. Recently, Satsumi Omikami has raised land for us above the sea surface, as we should be able to start salo our sea fish. The variety of edible fish should be also increased. But yes, back on the topic, three fragments should be hidden. Three key located around the Danikichi Mikoshi. These would the Narrows and Evernight Temple and Serpent's Heart. When I say hidden, I do mean the officials in charge of setting the trials up are very capable indeed. If you see the altar at the Serpent Heart, you may want to research that place thoroughly for clues. Shiva Siri spent all day setting them up. The special offer corps Xanthosis, the armed judges of the Nether in the Bakuku, that's what the Jivari are. They possess tokens made of the special material that could cause the souls of Bakuku to reveal themselves. पता है ना नए एनिमीज आ चुके हैं नहीं पूरे दो नए स्पेक्टर आ चुके हैं, नया हेरल्ड आ चुका है और क्या कहते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं हेल्थ खाने वाले 3 और जानवर आ चुके हैं। हेल्थ तो खाते ही खाते हैं, अगर सपोज तुम्हारी एलिमेंटल एनर्जी भी रहेगी ना तो उसको भी खा जाते हैं भाई साहब। अपने अटैक से। Batatsumi Island was the product of Archon War. Before that, Bakuku history are filled with. लंबा है बे बकवास। अरे एक तो ये पता है वो नहीं ऐड करते भाई, वॉइस लाइन क्यों नहीं ऐड करते मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब स्टोरी क्वेस्ट के लिए कर सकते हो, साइड क्वेस्ट के लिए साले ऐड करने में पता नहीं क्या चले जाएगा इनका। वो भी मैं जब ये ऐसा साइड क्वेस्ट इंपॉर्टेंट है इनके लिए। They are not quite the same as ritual afterimage of mind. These people have been chosen by undying principle of economia due to their powerful emotions, their transgression as a result in after image being created. They were what Jivari calls the sads of Tokyo, but bear in mind the principle that to know shin is to free of it. Don't tell them they are after images. Other after images are not like me. The moment they realize they are sad of their former sister, they will disappear. On the other hand, people of economy have gotten used to it by now. Well then, good luck to you. Gather 3 fragment. Now what the fuck, कहाँ मिलेगा ये 3 fragment, देखना पड़ेगा. I think 3 island जाने पड़ेंगे. तो एक यहाँ पे है. पहले ये टेलीपोर्टर खोल लेते हैं. क्या है, वापस से मराना नहीं है हमको यहाँ पे. कहाँ चढ़ जाना है? ये किस साइड है? हाँ इस साइड है. और प्लस इन्होंने टोटली न्यू पजल्स ऐड किए हैं, बहुत न्यू पजल्स हैं. और कुछ पजल सिर्फ रात में हो सकते हैं, कुछ पजल दिन में हो सकते हैं. बहुत बकचोदी ऐड किए इन्होंने. Why you bullying me, sir? Why are you following me? ये क्या बाबा सी रहे, मैंने यहाँ पे अभी अभी की देखी थी, गायब कैसे हो गई है? क्या बाबा सी रहे?
in mind. ओ ये हवा में है, तभी मैं सोचा देखा था बट गया कहाँ। भाई मेरे पीछे पड़ गया भाई ये। तू इधर आ, तेरे को बताता मैं। इधर आ, बॉम्ब मार रहा उधर से। Rain outlines your fate. Know my sword. Wit for it. Huh? There is no escape. Now you shall perish. Ha! ये देखो ये क्रायो वाले घूम रहे हैं यहाँ पे, चूतिया। यार इधर आ भाई, मैं वो पानी में नहीं जा रहा हूँ, जमने का शौक नहीं है मुझे। ये क्या एनिमी है? हाँ ये नया एनिमी है, वही तो बोल रहा हूँ। ये देख क्रायो छोड़ रहा है, ये इसका वाटर वाला वर्जन भी है। मैं ये मेरी एलिमेंट, यही तो एलिमेंटल एनर्जी खाता है अगर इसके हिट अटैक हिट करते हैं तो। अबे ये क्या बवासीर है बे, ये क्या बवासीर है। उधर रीसेट हो गया, नीचे अपने आप ही कूद गया। जाओ मेरा, मेरी अल्टी चली गई। तू इधर आ, थोड़ा सा कोने से इधर आ। कहा है कि मेरी अल्टी जा चुकी है। धक्का दे दो तेरे को, धक्का देता हूँ। नो ये क्या बवासीर है। स्विच टू वाइट नाइट। ओह मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुके हैं। प्लस पता है यहाँ पे जो ऐसे रैंडम बॉक्सेस रहते हैं उनसे 10,000 मुरा मिलता है, इजी 10,000 मुरा। ना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आई सपोज सिली को फॉलो करना होगा। ऊपर साइड क्वेस्ट भी आ गया है। ओ जा नहीं सकता, अच्छा नाइट में ही करना पड़ेगा। नाइट में ही करना पड़ेगा। नो वे सिली। अबे कहाँ चली गई भाई। अच्छा ऊपर गई है। भाई कैसे क्लाइम करूं, मैं तो फंस रहा है। हाँ यहाँ से चढ़ने का ट्राई कर सकते हैं। The place of worship are divided into Suncorn and the Moon Crux. They contain the power of White Knight and Evernight, are capable of bestowing such power upon those who come to pay obeisances. इसका मतलब क्या होता है? Use their energy to activate mechanism while in the opposite day and night state. The place of worship are divided into Suncores and Moon Crux. नहीं, ओ आई थिंक इसकी एनर्जी ले जाके वर्शिप करनी है।
ये देखिए राइम बाइटर विथ स्मॉल बिशाप, ये एक है और इसका भी डिफरेंट फॉर्म है उसका हाइड्रो वाला। वही बोल रहा था ना मैं, इन्होंने ऐड किया है नई चीज़ें। Even better than I imagined. It's my lucky day. Off we go. Okay. It's a miracle. ये है कहाँ पे? आई न्यू इट कि यहीं कहीं होगा ये। आई न्यू इट। ये देखो वर्ल्ड क्वेस्ट भी है यहाँ पे, साइड क्वेस्ट और खुल रहे हैं। यहाँ का ये कहाँ था साइड क्वेस्ट? नीचे कहीं है। कहाँ पे है ये? आई थिंक ये यहाँ कहीं होना चाहिए। आई बिलीव सो, बट वेयर? आई थिंक रात बनानी पड़ेगी ऊपर जाके मुझे। रात कहाँ बनाया था मैंने? लोकेशन ही भूल गया ना इसमें। ये मैकेनिज्म कहाँ गया पे? डे नाइट बनाने वाला। ये क्या बवासीर है बे, बाद में एक्सेप्ट करूँगा तेरा क्वेस्ट। अगले क्वेस्ट देखते हैं कहाँ पे है। गो टू एवरनाइट टेम्पल। एवरनाइट टेम्पल कहाँ है? ओके अनएक्सप्लोर्ड एरिया पे है। ना उधर कैसे जाऊँ मैं? यहाँ से फ्लाई करके जा सकता हूँ। यहाँ पे भी साइड क्वेस्ट है।